हरिः ओम् गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदानः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रियवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ये अर्वाङ्मुतवा पुराणे वेदं विद्वागं समभितो वदन्त्यादित्यमेव ते परिवदन्ति सर्वे अग्निं द्वितीयं समिति यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेदविधिब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्याः नाश्लीलङ्कीर्तये देता एव देवताः प्रीणाति नमः प्राच्यै दिशयाश्च देवता हेतस्यां प्रतिवसन्तेताभ्यश्च नमो नमो दक्षिणायै दिशयाश्च देवता हेतस्यां प्रतिवसन्तेताभ्यश्च नमो नमः प्रतीच्यै दिशयाश्च देवता हेतस्यां प्रतिवसन्तेताभ्यश्च नमो नमः उदीच्यै दिशयाश्च देवता हेतस्यां प्रतिवसन्तेताभ्यश्च नमो नमः ऊर्ध्वायै दिशयाश्च देवता हेतस्यां प्रतिवसन्तेताभ्यश्च नमो नमो धरायै दिशयाश्च देवता स्यां प्रतिवसन्तेताभ्यश्च नमो नमो वान्तरायै दिशयाश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्तेताभ्यश्च नमो नमो गङ्गायमुनयोर्मध्ये ये वसन्ति मे मानश्चिरञ्जीवितं वर्धयन्ति नमो गङ्गायमुनयोर्मनेभ्यश्च नमो नमो गङ्गायमुनयोर्मनेभ्यश्च नमः महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नमः शिनेभ्यः यजामदेवान्यदे शक्नवाममाज्याय दर्शं समावृक्षिदेवाः नमः सरसे नमः सरसस्पतये नमः सखीनां पुरोगाणां चक्षुषे नमो दिवे दिव्यै सम्प्रतसभां मे गोपाय ते च सभ्याः सभासदः तानीन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासदां देवीं वाचमजनयन्त देवाः तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति तानामन्द्रेषमोर्जन्दुहाना धेनुर्वागस्मानपसुष्टुतैतो मुहूर्तोऽस्तित्यन गृह्णन्तो तमस्तो सुप्रतिष्ठितमस्तो शुभलग्नमस्तो अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु लङ्कारत्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवता स्वरूप वेदोद्धरणार्थं धर्मोद्धरणार्थं चित्रावती तीरे अधिसौम्य पुट्टवर्ती क्षेत्रे अवतारकृतानाम् ईश्वरां वासुदेवीप्सितवरप्रदानां पुरगजरानां पुरगविभूषणानां काषायाम्बरधरकपोलपलकजटामुकुटमण्डितवरदाभयहस्तप्रदानां महादेव परमेश्वर श्रीपाद प्रतिष्ठार्थम अनुज्ञा देहि मे प्रभो देवदेव महादेव पर्तीश परमेश्वर श्रीपाद प्रतिष्ठार्थम अनुज्ञां देहि मे प्रभो देवदेव महादेव पर्तीश परमेश्वर श्रीपाद प्रतिष्ठार्थम अनुज्ञां देहि मे प्रभो वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं पर्वत इवा विचाजलिः इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठ इह राष्ट्रमुधारय अभितिष्ठव्रतं यतः अधरे सन्तु शत्रवः इन्द्र इव वृत्रः तिष्ठ वर्चो विहवेश्वस्तु वयं द्वे धानास्तनवं बुषेम मह्यन्नमन्दां प्रतिहश्चतस्रस्वयाध्यक्षेण प्रतनाजयेम मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्दो मरुतो विष्णुरग्निः मम अन्तरिक्षमुरुगोपमस्तु मह्यं वादः पवताङ्गामे अस्मिन् मयि देवा द्रविणमायजन्तां मय्याहीरः
ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि सोऽहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि श्रीनाथादिगुरुत्रयं भौकम्पटत्रयं मदैकं धूतीकृतं मण्डलं वीराद्यष्टचतुष्कष्टेवकं वीरावळीपञ्चकं श्रीमन्मानिमान्तराधिगितं वन्दे गुरोर्मण्डलं वन्दे गुरुपदध्वन्तं मवाङ्मानसगोचरम् नारायणं पद्मभं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपदाशरं च व्यासं सुतं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं हस्तामलकं शिष्यं सन्तोटकं वार्तिकारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि काशे सदा भान्तं शान्तम् आनन्दरूपिणं ज्ञानभानं हं वन्दे सद्गुरुं सत्यसायिनं पाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयोः संस्मरणां पुंसां सर्वतो जयमङ्गलं लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराभवः येषाम् इन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भोजो भोजो नमाम्यहं हृदय सकलकल्याणभाजनं यत्रजायते पुरुषस्तमजं नित्यं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते देवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः भारदेवताभ्यो नमः सर्वदेवात्मकस्वरूपवान् दत्ताय नाथाय नमः प्रार्थना समर्पयामि शुक्लाम्बरधरं विष्णुं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये परमशिवब्रह्मार्हे विष्णुः परमात्मा देवता देवी गायत्री नमः प्राणायामे विनियोगः ॐ भूः समस्तक्षयद्वारा श्री परमेश्वराज्ञा परमेश्वर प्रीत्यर्थं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि करिष्यमाणस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् आदौ श्री प्रशान्तमहागणपतिपूजनं करिष्ये आदौ श्री प्रशान्तमहागणपतिपूजनं करिष्ये अपवोपस्पृश्य तदङ्गं करशाध्यारा आपोवायतकं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशवापो नमापो मृतमापः सम्राडापो विराडापस्सन्दागस्यापो ज्योतिगस्यापो जोगस्यापः सत्यवापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्वरापो कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृणा स्मृताः उक्षौदसागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ चतुर्वेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः अङ्गैः सीताः सर्वे कलशामृतमाश्रिताः गङ्गे देविने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सर्वे समुद्रा सर्वतीर्थाः आयान्तुदेव पूजार्थं दुर्दक्षयकारकाः पूजास्थलानि द्रव्याणि आत्मानं च प्रोक्ष्य आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं दुर्गसां घण्टारं देवतास्वादाञ्जनम् गणपतिं ध्यात्वा ॐ निशसीद गणपते गणेशोत्वामाहुर्विप्रातमङ्गवीनान्नर्देत्वक्रियते किञ्चनारे महामर्कं माधवं चित्रमच्चानान्वा गणपतिगं भवामहे कविं कवीनामुपपश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां शृण्वन्नोदभिस्तीर्सादनम् आधर्तारूत् समस्थितो विकानि पावन्नावान्बद्बदानाम् आराम्नाः महान्ताद्रपर्वतं बीजाध्वः श्रीजाध्वाराः आभ यद्धानवान् आहान् हो वा हो ईडा नमो व्रात
पादपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्फुरम्बोदरायैकदन्ताय विघ्नविनाशिने हृदाय श्रीवरदमूर्धये महागणपतये नमः अर्थेक्षदां समर्पयामि ओं गं गणपतये नमः पादयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि ओं गं गणपतये नमः हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि ओं गं गणपतये नमः गन्धेषुद्धाचमनीयं माचमनीयं समर्पयामि ओं गं गणपतये नमः मधुवर्कं कल्पयामि ओं गं गणपतये नमः स्नपयामि भोर्भवस्सुवो भोर्भवस्सुवो भोर्भवस्सुवः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं माचमनीयं समर्पयामि ओं गं गणपतये नमः वस्त्रोत्तरीयार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि ओं गं गणपतये नमः विलेपनार्थे दिव्यश्रीपरिमलगन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमं तदुपरि अक्षतान् समर्पयामि ओं गं गणपतये नमः पुष्पमालिकां समर्पयामि ओं गं गणपतये नमः पुष्पैः सम्पूजयामि ओं सुमुखाय नमः ओं सुमुखाय नमः ओं एकदन्ताय नमः ओं कपिलाय नमः ओं जगन्नाथाय नमः ओं लंबोदराय नमः ओं निकटाय नमः ओं विघ्नराजाय नमः ओं विनायकाय नमः ओं धूमकेतवे नमः ओं गणाध्यक्षाय नमः ओं भारतन्दाय नमः ओं विनायकाय नमः ओं वक्रतुण्डाय नमः ओं धूमकेतवाय नमः ओं हेरन्दाय नमः ओं चन्द्रपूर्णाय नमः गणपतये नमः योः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि शताङ्कुरा सर्वगुं हरदमे पापं दूर्वादुःसप्तनाशिनी काण्डात् परहन्ति परुषः परुषः परि हेवानो दूर्वे प्रतुनसहस्रेण शतेन चामुपयामि वायुस्ताकुमग्रे प्रमुमोक्तुदेव प्रजापतिः प्रजया संविधानः प्रमुञ्चमाना भवनस्य रेतो गातुं धत्तयजमानाय देवाः ॐ गं गणपतये नमः धूपमाग्रापयामि धूपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि दीपम् ॐ शिवेन मे सन्तिष्ठस्व स्योनेन मे सन्तिष्ठस्व सुभूतेन मे सन्तिष्ठस्व ब्रह्मवर्चसेन मे सन्तिष्ठस्व यज्ञस्यर्ध्यमनुसन्तिष्ठस्वोपते यज्ञनमपुपते नमपुपते नमः दीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा हरि श्री महागणपतये नमो नमः तथा शक्त्याम्रबलं कदरे परद्वयं ताम्बूलसहितं निवेदयामि निवेदनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि मध्यमृतपानीय समस्तोपचारान् कल्पयामि ओम सर्ववाद्यं नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्नविनाशिने सुसुताय श्रीवरदमूर्धये नमो नमः ॐ सर्वपराधक्षमामर्धसर्वमङ्गलाभाप्त्यर्थम् अखण्डकर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि समर्पयामि रक्षान् धारयामि ॐ हराय नमः अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवदातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् मनस्पते देवयन्तस्त्वेमहे उपप्रयल्तुमरुतः सुदाना वयन्द्रप्राशोर्भावास च स्वामिद्धि साहसस्पुत्रमर्त्या उपब्रूते धने हिते सुवीर्यं मरुता स्वश्यन्दधीतयो वाचके प्रैतु ब्रह्मणस्पतिः प्रदेव्येतु सूनृता अच्छा वीरन्नर्यं पङ्क्तिराधसं देव यज्ञन्नाजन्तुनः वेदोक्तं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि महागणपते नमः समस्तोपचारार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि अनया पूजया भगवान् सर्वात्मकः श्रीमन्महागणपति स्वामी सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु उत्तरेषुभकर्मणि शुभकर्मण्यवेघ्नमास्तु इमं मे वरुण ॐ
ఓం పుణ్యాహం చేసేసి తర్వాత ఓం ఇమం మే వరుణశ్రుధీహవమధ్యాశమృడయా త్వామవస్వరాచ. எல்லாரும் பிரார்த்தனை மகாகணபதியிலே பண்ணுவோம். वक्रतुंड वक्रतुंड महाकाय महाकाय सूर्यकोटि सूर्यकोटि समप्रभा समप्रभा निर्विघ्नं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वदा अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितः यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नः चितस्तस्मै गणाधिपतये नमः. प्रार्थना. ओम इमं मे वरुणश्रुधीहवमध्याशमृडया त्वामवस्युराचके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्लाहास्तेजसमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोद्धर्षगं समानाय प्रमोषीः भूर्भुवस्वरों वरुणं ध्यायामि वरुणमावाहयामि वरुणस्य इदमासनम् सकल ओं वं वरुणाय नमः. आसनार्थे क्षतान् समर्पयामि. वं वरुणाय नमः. पादयोः पाद्यं समर्पयामि. वं वरुणाय नमः. हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि. वं वरुणाय नमः. मुखारविन्धे शुद्धाचमनीयं आचमनीयं समर्पयामि. मधुपर्कं कल्पयामि. वं वरुणाय नमः. स्नानं समर्पयामि. यदतः सम्प्रजतेरः वनदताहते तस्मादानद्यो नामस्तथा वो नामानि सिन्धवः यत्प्रेषिता वरुणेन ताश्रीभगं समवल्गताप्नोदिन्द्रो भोजते तस्माधानुस्थना अपकामसिन्धमानः अवीवरतमोहितम् इन्द्रोभिश्शक्तिभिर्देभेस्तस्माद्भार्णामवोहितम्. ओं वं वरुणाय नमः. स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि. वं वरुणाय नमः. वस्त्रोत्तरीयार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि. वं वरुणाय नमः. उपवीताभरणार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि. वं वरुणाय नमः. विलेपनार्थे दिव्यश्रीपरिमलगन्धान् धारयामि. गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमं तदुपरि अक्षतान् च समर्पयामि. वं वरुणाय नमः. पुष्पमालिकां समर्पयामि. वं वरुणाय नमः. पुष्पैः सम्पूजयामि. वं वरुणाय नमः. ओं प्रचेतसे नमः. ओं स्वरूपिणे नमः. ओं अपाम्बतये नमः. ओं मकरवाहनाय नमः. ओं जलाधिपतये नमः. ओं पाशहस्ताय नमः. ओं तीर्थराजाय नमः. ओं जुम्भकाय नमः. ओं अनर्घ्यमणिभूषणाय नमः. ओं यादसाम्पतये नमः. ओं श्वेतच्छत्रधराय नमः. ओं पर्जन्याय नमः. ओं मेघनाथाय नमः. ओं वरुणमूर्तये नमः. ओं दिव्यचरणारविन्दयोः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि. धूपः. ओं नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशां. वं वरुणाय नमः. धूपमाग्रापयामि. धूपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि. भूर्भुवस्सु परिदिवा एतास्तिस्रो व्याहृतयः तासामहस्मीतां चतुर्थीं महाचमस्य प्रवेदयते मह इति तद्ब्रह्म स आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः. वं वरुणाय नमः. मङ्गलदीपं दर्शयामि. दीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि. ॐ भूर्भुवस्सुवः. नैवेद्यं गायत्र्या प्रोक्ष्या देवसवितप्रसवत्यं तप्तेन भृञ्जामि. ॐ अमृतं भवतु. ॐ प्राणाय स्वाहा. ॐ अपानाय स्वाहा. ॐ व्यानाय स्वाहा. ॐ उदानाय स्वाहा. ॐ समानाय स्वाहा. ॐ ब्रह्मणे स्वाहा. आराधितवृणमूर्तये नमः. यथाशक्ति आम्रफलं काश्मीरफलं ताम्बूलसहितं निवेदयामि. निवेदनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि. मध्यमृतपानीयधनुस्तोपचारान् परिकल्पयामि. ॐ बुदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमग्निश्रुताय अथ वयमादित्यं व्रते तवानागसो अदितये स्याम. जुम्बकाय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्. वरुणाय नमः.
सर्वापराधक्षमाणार्थं सर्वमङ्गलावाप्त्यर्थम् अखण्डकर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि नीराजनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि रक्ष रक्षान् धारयामि ओम यच्छिद्धिते विशो यथा प्रदेववरुणं व्रतं मनीमसिद्ध्यविद्यवे यत्किञ्छेदं वरुणदेव्यजनेभिद्रोहं मनुष्याश्चरामसि अचित्ते यत्तवधर्माशुजोऽपि भमानस्तस्मादेन सो देवरीर्षः कृतवासो यद्रुपूर्णदेव यद्वाघा सत्यमतयन्न विद्मा सर्वदा विशशिथिरेव देवाथा देस्यावरुणप्रयासः वरुणमूर्थे नमः प्रार्थनापूर्वकवेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि तत्र श्यामराजपसारान् कल्पयामि अनया पूजया भगवान् सर्वात्मकः वरुणः प्रेजताम् गणपति ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः देवी पवित्रं गुरुजासनं त्रिछंद प्राणायामे विनियोगः परमेश्वराज्ञा परमेश्वर प्रेत्यर्थम् शुभाभ्यां शुभसिद्धौ शुभे शोभने मुहूर्ते ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे कान्तेऽस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादिषष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्री शुभकृतनाम संवत्सरे उत्तरायणे चान्द्रमानेन ज्येष्ठमासे सौरमानेन शुभमासे पक्षे अद्य शुक्लपक्षे अद्य नवम्यां शुभतो वासरः वासरस्तु सौम्यमासरयुक्तायाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रोक्तायाम् सिद्धियोगः सवेकरणयुक्तायां अस्यां वर्तमानायां शुभतिथौ श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थम् எல்லாரும் சொல்லுங்கோ அவர்கள் குடும்பத்தில் இருக்கவங்களெல்லாம் ஞாபகப்படுத்திக்கோங்கோ உங்கள் குடும்பம் உங்கள் சமிதி உங்கள் கிராமம் எல்லாரையும் ஞாபகப்படுத்து உங்களை மனசில் வச்சுக்கோங்க மனசில் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்கோ சொல்லுங்கோ அஸ்மாகம் சஹகுடும்பானா அஸ்மின் பூமண்டலே வித்யமானானாம் சர்வேஷாம் விபத சதுஷ்பத சஹிதானः மகாஜனானாம் க்ஷேமஸ்தைர்ய वीर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याण अभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम विशेषतः युग अवतार पुरुष सर्वान्तर्यामी सर्व भक्तानां हृद्गुह वासिनां
वासिनः अस्माकम् अतिप्रिय श्रीस्वामिनः दिव्य अनुग्रह संकल्प बलेन अस्मिन् राष्ट्रे वैमनस्य निवर्तिद्वारा सौमनस्य सिद्ध्यर्थं ऐक्यमत्य सिद्ध्यर्थं वेद अभिवृद्ध्यर्थं वेदविदा ब्राह्मणानां विशेषतः श्रद्धा भक्ति अतिशयतः अभिवृद्ध्यर्थं विशेषतः बालिकानां अतिविद्या पारंगतत्व सिद्ध्यर्थं मेधाविलास सिद्ध्यर्थं परीक्षाया अत्योन्नत स्थान सिद्ध्यर्थं अविवाहित कन्यकानां वराणाञ्च स्वकुल एव उद्वाहमङ्गल प्राप्त्यर्थं सत्सन्तान सौभाग्य अभिवृद्ध्यर्थं वृद्धकाना अरोग दृढ गात्रता सिद्ध्यर्थं विशेषतः उग्रमृत्यो कालमृत्यो नीचमृत्यो ध्रुवमृत्यो भयमृत्यो अपमृत्यो दोष परिहारद्वारा वेदोक्तं दीर्घायुष्य प्राप्त्यर्थं जातकवशाते सूचित समस्त दोष निवर्तिपूर्वकं शान्ति अभिवृद्ध्यर्थं जन्माभ्यासाते जन्म प्रभृति एतत् क्षण पर्यन्तं समस्त पाप बाधानां निवर्तिद्वारा पूतत्व जन्म साफल्यञ्च सिद्ध्यर्थं विशेषतः श्रीस्वामिनः दिव्य शरण कमलयोः अचञ्चल निष्कलङ्क निष्कपट भक्तिं सेवां च अभिवृद्ध्यर्थं श्रीस्वामिनः दिव्य प्रेरणया मानवसेवा माधवसेवामिव कर्तृं सौभाग्य अभिवृद्ध्यर्थं श्रीस्वामिनः दिव्य आदेशेन श्वः करिष्यमाण श्री सत्यसाई दिव्यपाद प्रतिष्ठापन महोत्सवांगम अद्य पूर्वांगत्वेन संकल्प प्रारभ्य
प्रारभ्य नवरत्न न्यासपूर्वकम् श्रीपाद प्रतिष्ठापन आख्य महामंगलप्रद श्री स्वामी आराधनम् आचार्यमुखेन अन्योन्य साहाय्येन च अद्य करिष्ये अपउपस्पृश्य तदंगम सुमुहूर्तता सिद्ध्यर्थं यथाशक्ति हिरण्यधानं करिष्ये। ओम हिरण्यगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यफलदं मतशान्तिं प्रयच्छ मे। ओम महागणैः संकल्पित लोककल्याणार्थं श्री सत्साई ईश्वर दिव्यपाद प्रतिष्ठापन महोत्सवांगे आरंभ मुहूर्त लग्नापेक्ष आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणां शुभ आनुकूल्य सिद्ध्यर्थं यत्किंचित् हिरण्यं नानागोत्रेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः तेभ्यः संप्रददे नमः नमः। ओम तत्सत्। ओम भवद्भिर्ज्ञातः पुण्याहं पुण्याहं वाचयिष्ये ओम अस्मिन् श्री सत्साई ईश्वर दिव्यपाद प्रतिष्ठापन महोत्सवे वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्तो कर्मरध्यतां श्री सत्साई ईश्वर दिव्यपाद प्रतिष्ठापन कर्मणि स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति। सत्साई ईश्वर दिव्यपाद प्रतिष्ठापन महोत्सवे पुण्याहं भ्रवन्तो शान्तिः अस्तु तुष्टिः वृद्धिः अविघ्नम् आयुष्यम् आरोग्यम् स्वस्ति शिवं कर्म ईशान्यां बहिर्देशे अरिष्ट निरसनम् आग्नेयां यत्पापं तत्प्रतिहतम् नैऋत्यां यच्छ्रेयः शुक्रांगारक बुध बृहस्पति शनिश्चर राहुकेतु सोमश्चरोगाः सर्वे ग्रहाः प्रियन्तां देवता प्रियन्तां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः प्रियतां भगवान् सत्यसायीश्वरः। ओम ताशसन्तु ओम शान्तिः 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 दधिक्राविण्णकारशं वाजनः सुरभिर्मुखाग्रत् प्रणायोगं शिदार्हत आपोहिष्ठामयो भवस्थानभोर्जेर्धातन महेरणाय चक्षुषे योवश्चिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उषदीर्व मातरः तस्मारङ्गमामवशिक्ष्या जन्मथा आपो जनयथा जनः करण्यवर्णाश्रयः पावकायासु जातकश्यपो यास्विन्द्रः अग्निया गर्भन्धे विरूपास्तानापश्यग्स्यो न भवन्तो या सागुं राजावरुणो याति मध्ये सत्यान्ते उपश्यञ्जनानां मधश्चतस्सुजो या पावकास्तानापश्यग्स्यो न भवन्तो या देवादिविगृह्णन्ति भक्षण्यान्तरिक्षे बहुधा भवन्ति याः प्रथमें वयसो वन्दन्ति शुक्रास्तानापश्यग्स्यो न भवन्तो शिवेन मादुक्षुषा पश्यता पश्यव्यादनोपश्यतोत्पचं मे सर्वागुम् अग्निगुं लप्सुषदो वेवमयिवर्चो बलमोजो निधत्ता पवमानस्सु वर्जनः पवित्रेण दर्शिणे यप्पोदासपनात्मा परन्तु मा देवजनाः परन्तु मन्वोधया परन्तु विश्वायवः जातवेद पवित्रवते पवित्रेण पराहिमा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा कृतो गुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चुषे अग्ने विदमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यान् देवसवितः पवित्रेण सवेन जायितं ब्रह्मपुनीमहे वैश्वदेवी पुनदे देव्यागादे यच्चे बक्वेस्तनुवो वीतपृष्ठाः तत्सधमाद्येषो वयज्ञस्य मतयोरयीनां वैश्वानो रश्मिभर्मापनादो वातप्राणेनेश्वरोमयो भूः त्यावा पृथिवी वयसापजोभिः सावरेज्ञे मावनीतां बृहद्भिः विशस्त्रुभिः वरज्येष्ठैर्देवनुभिः अग्ने रक्षये पुनाहिमा देवापुनता येनापोदव्यङ्गहारेण दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्मपुनीमहे यप्पाववाने रध्येते ऋषभिः संवृतकं रसं सर्वगं सपोदमश्चादि हृदितं मादर्श्वना भाववानेर्योध्येते शिवसंवृतकं रसं तस्मै सरस्वती ऋहेक्षेरकं सर्पिरमधोदकं भाववाने नीः सुदुगाहि वयस्पतिः ऋषभिः संवृतोऽसः ब्राह्मणेषु मृतकं मिदं भाववानेर्दिशन्तुनः इमल्लोकमथोमं कामान् समर्थयन्तुनः देवैर्देवैः समाभृताः भाववाने सुस्तिनीः सुदुगाहि कृतश्रुतः ऋषभिः संवृतोरसः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं वरदे सदा सहस्रधारेण भाववान्यर्पणन्तु वा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यमकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविद वयं भूतं ब्रह्मपुनीमहे इन्द्रस्वनेति समापनादो सोमस्वस्यावरुणस्य मीच्याय मोराया पुरुणाभिपुनादुमा जातवेदामोर्जयन्त्यापुनादो भोर्भवस्सुवः तच्छंयोरावृणीमहे गातो यज्ञाय गातो यज्ञबलये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओर्धञ्जिकालभेषजं हन्नोस्तद्विपदे शञ्चतुष्पदे ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
वरुणाय नमः गणपति वरुणाभ्यां नमः गणपति वरुणाभ्यां नमः स्वस्तोपचारार्थे पुष्पाक्षतां समर्पयामि सुकुमितास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च हर हर இதுகாலம் சங்கல்பம் ஒவ்வொரு சங்கல்பத்திலே சொல்வோம் சுவாமியினுடைய திவ்ய சரணம் பாதம் இருக்குல்லையே அதிலே நமக்கு பக்தி ஏற்படட்டும் நமக்கு சேவை பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் ஏற்படட்டும் ஒவ்வொரு தடவை சங்கல்பத்தில் சொல்லுவோம் அது இன்னைக்கு சத்தியமாச்சு பகவான் சொல்ற அந்த வார்த்தை கேட்டு திவ்யமணி பாதுகை இங்கே நமக்கு பிரசாதமாக அருளியுள்ளார்கள் இங்கே பிரதிஷ்டைக்கு நமக்கு ஒரு அவகாசம் ஒரு ஆனந்தம் ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு வைபவம் நமக்கு கொடுத்துள்ளார்கள் சுவாமி ஸோ நம்ம பிரார்த்தனை பகவான் சத்தியம் நம்ம பிரார்த்தனையும் சத்தியம் ஸோ அதனாலே திருட சங்கல்பம் இருந்ததுன்னா பகவானே அதனால தானே அவதாரமே இறங்கித்து எத்தனையோ மகான்கள் தவம் பண்ணதுனால தான் இந்த சத்சாயிங்கிற அவதாரமானது மேலிருந்து இறங்கித்து அது இன்றைக்கும் நம்மளை வழி நடத்திருக்கிறது நாம் உணர்கிறோம் ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானுடைய பாதம் எல்லாருக்கும் காமன் உதைனங்கோபா அதிரிஷன்னுதாஹாரியா வேதம் சொல்றது இடையர்களும் தண்ணி கொண்டு போகிறவர்களுக்கும் கூட அவர்கள் கடவுளை பார்க்க முடியாத அந்த சூரியன் பிரத்யக்ஷமாக அனைவருக்கும் பொது கடவுளாக உள்ளான் அப்படி சொல்லப்படுகிறது போல இந்த பாதமானது திவ்யமணி பாதமானது அனைவருக்கும் எப்பொழுதும் இந்த சந்நிதி இருக்கும் யாரும் வந்து பாத நமஸ்காரம் இங்கே பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படி ஒரு வசதி பகவான் நமக்கு இங்கே செய்து கொடுக்கிறார்கள் நீங்கள் உங்களுடைய வீட்டு குடும்ப இன்விடேஷன் இங்கேயே சமர்ப்பணம் பண்ணலாம் எது வேணால் அங்கே பேசிக்கலாம் அவர்கிட்ட மற்ற கோவில் ஆலயம் தேவாலயம் சாத்தினா கூட இது ஓப்பனாகவே இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் இப்போ புண்ணியாக வச்சனம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கர்மா நடந்தது இதிலே ஸ்வஸ்தி மங்களங்களும் ரித்தி டெவலப்மெண்ட் மற்றும் புண்ணியாகம் இன்னர் கிளீனிங் இதெல்லாம் மூன்றும் பிரார்த்திக்கப்பட்டு வருணனை பவமான சுத்தம் அப்படின்னு பவித்ரஹா அப்படின்னு பகவான் நடக்க சொல்வார் ஸோ அந்த பவித்திரமான மந்திரங்கள் பவமானஹான் பேர் பகவானுக்கு நம்முடைய சுத்திப்படுத்தக்கூடிய தன்மை அவனுக்கு தான் இருக்கிறது வெளியில் என்ன சோப்பு போட்டோம்னா உள்ளழுக்கை நிற்கக்கூடியது இறைவனுடைய ஸ்மரணம் எஸ்பரேத் புண்டரீகாட்சம் சபாஹ்ய அபியந்தர சுச்சிஹின்னு பகவானை நினைக்குங்கால் தான் உள்ளம் சுத்தியாகும் அதுதான் நமக்கு நாமஸ்மரணை இதுக்கு கிரேட்டஸ்ட் சாதனையாக நமக்கு வைத்துள்ளார்கள் பகவான் இந்த வேதமெல்லாம் கூட பகவானுடைய நாமஸ்மரணை தான் பகவானை பற்றி துதி கொஞ்சம் விஸ்தாரமாக சொல்கிறது நாமம் வெறும் நாமமாக சொல்கிறது அவனுடைய குணநலங்களை சொல்கிறது அதனாலே இந்த புண்ணியாகவாதனம் இப்போது இந்த கலசமானது சுத்தி பண்ணி யாகசாலை சுத்தியாகும் அப்புறமா வாஸ்து சாந்தியாகி மேலே இந்த கலசமானது இப்போது நிறுவப்படும் ஓம் शुचिजन्मानश्रुतिः पावकाः अग्निश्रुतिव्रततमश्रुतिर्विप्रश्रुतिः कविः शुचिरोचदाकुतः उदग्ने श्रुतिहस्तवशुक्राभ्राजन्तयीरते चर्चयाः ॐ प्राच्यां देवार्द्विजो मार्देन्दां दक्षिणायां दिशिमासाः प्रतीच्छान्दिशिग्रः प्रणवो मार्देन्दामुदीच्छान्दिश्यापवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्दामोर्धायान्दयज्ञसंवत्सरो यमधर्मार्जयन्दां भोर्भवस्सुवः ॐ देवस्य त्वासपितु प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पोष्णोस्ताभ्यां यागशालां सर्वेषां महाजनानां च प्रोक् सत्यर्प எந்த கலசம் கீழ்படுறது ஜாக்கிரதை उत्थैर्यज्ञेषु वर्धते வரகு பாம்பு திறந்துருப்பேன் நாங்களே பண்ணி விட்டுருவோம் எடுப்பா வரகு இது இந்த கலசத்தில் வரகுன்ற ஒரு தானியம் இங்கே பூரணமாகிறது
మంగళవాద్యం వాసికలాం అని రెడీ చేసి పరిస్థితులు వేసి ఇక్కడనే కూడా హోమం చేస్తుంది అక్కడ धावति पवित्रे परिषिच्यते उक्थैर्यज्ञेषु वर्धते ओम आधारपीठाय नमः ओम मूलप्रकृते नमः आदिकूर्माय नमः आदिवराहाय नमः अनन्ताय नमः रुद्रमण्डपाय नमः श्वेतचामराभ्यां नमः ओम मणिमय सिंहासनाय नमः ब्रह्ममैकपादाय नमः रुद्रमैकपादाय नमः विष्णुमैकपादाय नमः ओम संविन्नाडाय नमः ओम धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः अधर्माय नमः ज्ञानाय नमः अवैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः सकल गुणात्मशक्तियुक्ताय श्री श्री साई दिव्यमणि चरण श्री कलशाय नमः भाजवस्थदेवो वत्सविता कार्पयतुश्रेष्ठदाय कर्मणे हरिः ओम् अग्नाय हिवीतये गृणानो व्यधातये निहोदा सत्विबर्हिषि हरिः ओम् छन्नो देवीरभिट्टज आपो भवन्तु पीतये संयोदभिश्रवन्तु नः ओम् तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ओम सगिरत्ना निधासुषे सुवाती सविता भगाः संभागं विक्रमी नो वृषभो न युद्धो धनाधनः शोभनश्चर्षणीनां संग्रन्दनो न विषये फीडर करने का दे देखो गंभीर का पुत्र गंभीर का
श्री स्वरूपिणे नमः अपां पतये नमः मकरवाहनाय नमः बालहस्ताय नमः देवराजाय नमः मूलवकाय नमः नमः ज्ञानसां पतये नमः देवसुत्राय नमः वर्जन्याय नमः मेघनाथाय नमः वर्णमूर्धये नमः ओम शरणारविन्दयोः पुष्पाणि धूपदीपार्थं समर्पयामि ओम भूर्भुवः ब्रह्मणे स्वाहा वास्तुष्पदे प्रजाने कृष्णान्नोषत्सन्नये वास्तुष्पदे सुग्मजा सुगन्धदाने पक्षे मेहरन्मजा गातुमत्या आवहत्ते मोदयोगे वरन्नो दुर्गम्पादस्तानः वास्तुष्पदे प्रतरन्नो निधिकोभिरश्चेभिरिन्दो अजरासस्ते सच्चे साविदेवपुत्रान् मदिनोषस्वामी वः वास्तुष्पदे वास्तुष्पतिं वास्तुपुरुषं ध्यायामि आवाहयामि आसनार्थे वास्तुपुरुषाय नमः वास्तुपुरुषाय नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि ओम ध्यानं ध्यात्वा ओम भल्लानाय नमः सूर्यं ध्यायामि
सवित्रं ओम भूर्भुवस्वरं सवितारं ध्यायामि आवाहयामि ओम भूर्भुवं ध्यायामि ओम भूर्भुवस्वरं मित्रं ध्यायामि आवाहयामि ओम भूर्भुवस्वरं राजयज्ञं ध्यायामि आवाहयामि ओम भूर्भुवस्वरं ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमत सुरजो वेनावः तबुद्धया पमास्य विष्ठासस्य वनवसस्य विवाह कराब्जैः वाशं कोदण्डमिक्षुद्भ्रमगमभ्युङ्घं च बान् बिभ्राणासृग्यपालं त्रणसितापेन वक्षोरुहाढ्यां देवी बालार्कवर्णवसुगिरिप्राणहलं ओम वास्तुमण्डलदेवताभ्यो नमो नमः ओम वास्तुश्रेव्रजानि यस्मान् स्वादेशो भवानः यत्रेमहे प्रतिमोहस्तन्नयदिदेहिन्द्रे ओम वास्तुपुरुषाय नमः ओम वास्तुमण्डलदेवताभ्यो नमः समर्पयामि ओम वास्तुमण्डलदेवताभ्यो नमो नमः पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि ओम वास्तुमण्डलदेवताभ्यो नमो नमः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि ओम वास्तुमण्डलदेवताभ्यो नमो नमः आचमनीं समर्पयामि वास्तुमण्डलदेवताभ्यो नमः मधुपर्कं कल्पयामि वास्तुमण्डलदेवताभ्यो नमः मालिकां समर्पयामि पुष्पैः पुरुषाय नमः ओम वास्तुशिखिने नमः ओम पर्जन्याय नमः ओम शिखिने नमः ओम पर्जन्याय नमः ओम जयन्ताय नमः ओम शिखिने नमः ओम शिखिने नमः ओम पर्जन्याय नमः ओम जयन्ताय नमः ओम इंद्राय नमः ओम सूर्याय नमः ओम सत्याय नमः ओम धिषाय नमः ओम आकाशाय नमः ओम वायवे नमः ओम सवित्रे नमः ओम पूष्णे नमः ओम यमाय नमः ओम गंधर्वाय नमः ओम भृंगराजाय नमः ओम पितृभ्यो नमः ओम दव्वारिकाय नमः ओम सुग्रीवाय नमः ओम पुष्पदन्ताय नमः ओम वरुणाय नमः ओम असुराय नमः ओम सोषाय नमः ओम महाये नमः ओम भल्लाटाय नमः ओम सोमाय नमः ओम सर्पाय नमः ओम आदित्यये नमः ओम तिथये नमः ओम तिथये नमः ओम आदित्यये नमः ओम सविताय नमः ओम सवित्रे नमः ओम तस्मान् नमः जयाय नमः ओम रुद्राय नमः ओम पृथ्वीधराय नमः ओम अग्निवे नमः ओम बृहस्पते नमः ब्रह्मणे नमः विहरणारविन्दयोः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि कर्पूरं दीपः ओम नमस्ते ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम् ओम भूर्भुवस्वः नैवेद्यं प्रतिष्ठापयेत् गायत्र्या प्रोक्ष्य ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा
मध्ये अमृतपानीयानि समस्तोपचारान् परिकल्पयामि। ओम यत्वेमहे सखा सुषेव येधिनः शुभगं शिवं शुभगं शुभं वास्तु पुरुषाय नमो नमः। स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा ओम सत्याय स्वाहा ओम दशाय स्वाहा ओम आकाशाय स्वाहा ओम वायवे स्वाहा ओम पूष्णे स्वाहा ओम वितथाय स्वाहा ओम गृहक्षताय स्वाहा ओम यमाय स्वाहा ओम गंधर्वाय स्वाहा ओम भृंगराजाय स्वाहा ओम मृगये स्वाहा ओम पितृभ्यो स्वाहा ओम दौवारिकाय स्वाहा ओम सुग्रीवाय स्वाहा ओम अष्टदन्ताय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम असुराय स्वाहा ओम सोषाय स्वाहा ओम पापाय स्वाहा ओम रोगाय स्वाहा ओम हये स्वाहा ओम मुख्याय स्वाहा ओम भल्लाटाय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम सर्पाय स्वाहा ओम अतिथये स्वाहा ओम तिथये स्वाहा ओम आपाय स्वाहा ओम सवित्रे स्वाहा ओम जयाय स्वाहा ओम आपवत्साय स्वाहा ओम सवित्रे स्वाहा ओम विवस्वते स्वाहा ओम विबुधाधिपाय स्वाहा ओम मित्राय स्वाहा ओम राजेक्ष्मणे स्वाहा ओम पृथिवीधराय स्वाहा मध्ये ब्रह्मणे स्तोष्पदे प्रतिजानी यस्मान् पादेहानिको भवानः यथेमहे प्रजन्मये स्वाहा क्षेमोपयोगे वरन्नो योऽयं पादस्वस्तिधत्सदान स्वाहा स्वास्तोष्पदे प्रवर्णोमयेधिगोभिरश्वेभिरन्दो मुद्रासस्ते सुखेस्यापदे पुत्रान्विस्वाहा श्रीमहावास्तोष्पदे स्वारूपाण्याभिषन् तथा सुषेव येधिन स्वाहा शिवं शुभगं शुभं स्वाहा स्वाहा
वायवे चान्तरिक्षाय महते च स्वाहा अंतरिक्षाय महते तन्नमः सुवरादित्याय दिवे महते च स्वाहा आदित्याय दिवे महते तन्नमः भूर्भुवस्सुवः चन्द्रमसे च नक्षत्रेभ्यः च दिव्यश्च महते च स्वाहा से नक्षत्रेभ्यः दिव्यः महते नमः ओम सप्तमे समिधः सप्तजुक्तमिदः प्राणबुद्धिदेह धर्माधिकारः सर्ववाद्यम् ओम इतः पूर्वं प्राणबुद्धिदेह धर्माधिकारतः जाग्रत् स्वप्नसुषुप्त्यवस्थासु मनसा वाचास्ताभ्याम् अभ्यामुदरेण हिष्ण्या यस्मृतां यदुक्तां यत्कृतां तत्सर्वं ब्रह्मार्पणं भवतु ओम वास्तुष्पते प्रतिजाने यस्मान् स्वावेश अनमेव भवानः यत्वेमहे प्रतिदन्नो जुषस्पजन्न ये धिद्विपदे चतुष्पदे स्वाहा सप्तजिह्वा सप्तर्षयः सप्तधाम प्रयाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनिरावृणस्वा घृतेन स्वाहा ये सप्तपदैदन्नमः ओम हरिदेवं मूलेन परिषिज्यां यज्ञेन यज्ञमयन्तदेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सन्ते यत्र पूर्वे साध्यास्सन्ति देवाः ओम आराधितवास्तुमण्डलदेवताभ्यो नमो नमः ओम दिक्पालकदेवताभ्यो नमो नमः रक्षोगणदेवताभ्यो नमो नमः ओम कलशे
न पृथिवी भवानक्षरा निवेशने गच्छान श्रमसप्रथाः भूभ्यो ये के च पृथिवीमनो ये अन्तरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॐ नमः चेहा गच्छ यतिष्ठतिष्ठान्निध्यं गुरुकुरो दीपं पश्यत बलिं भक्षत आलयं रक्षस्व सर्वेषां जनानां कुटुम्बयोः शान्तिकर्तारः पुष्टिकर्तारः तुष्टिकर्तारः निर्विघ्नकर्तारः आयुकर्तारः परतो भवानेन बलिदानेन अनन्तानि सर्पकुलमण्डलदेवता प्रीयन्ताम् ब्रह्माणं ध्यायामि अवाहयामि पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि स्तारविन्दयोः दिमद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीं समर्पयामि मधुपर्कं परिकल्पयामि स्नापयामि भूर्भुवस्वोर्भूर्भुवस्वोर्भूवस्वः स्नानानन्तरम् आचमनीं समर्पयामि हस्तोत्तरीयां समर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ ब्रह्मणे नमः यक्षाय नमः ओम अष्टपुलनागेभ्यो नमः ओम गन्धर्वाप्सरेभ्यो नमः ओम मरुद्गणेभ्यो नमः ओम स्कन्धाय नमः ओम नन्दिने नमः ओम शूलाय नमः ओम महाकालाय नमः ओम दक्षादिसप्तगणेभ्यो नमः ओम दुर्गायै नमः ओम विष्णव्ये नमः ओम சாய்ராம். இதுக்காரும் வாஸ்து பலி வாஸ்து ஹோமம் நம்ம வீடாக இருந்தால் வாஸ்து ஹோமம் பண்ணுவோம். இது தேவாலயமாக இருக்கிறதால பிரதேச பலின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த 8 திப்பாளர்கள் இந்திரன் அக்னி வாயு இப்படி சொல்லக்கூடிய திப்பாளர்கள் மற்றும் பிரம்மா கீழே அனந்தன் இவர்களை பூஜித்து இப்போ பலியானது. இந்த பக்கத்திலே சர்வதோ பத்ரமண்டலம் அந்த இடத்துல பூஜை எடுத்தது இந்த நவகிரக ஆராதனை யாகசாலை பூஜைகள் எல்லாம் ஆயிற்று. அப்புறம் அடுத்ததாக அங்குரார்ப்பணம் என்று சொல்லக்கூடிய முளை விடுதல் அது முடிந்தவுடனே கங்கண தாரணம் அப்புறமா பிரதான ஹோமத்துக்கு வருவோம். புண்ணியாகவாஜலம் மேத்வா सपुषानव्यक्षतसमादित्यमुदेतुनः शिवानश्चन्तमा भवतु लीला सरस्वती मादेव्यो महद्भिः शिलाप्रीवास्तु शिवास्तमध्वास्तमन्तो भूयास्त्वमावास्तो अस्तिस्मश्चरा पुष्पभूया यो अस्मान्यश्रियन्त पयं विश्वः साधुप्रतिष्ठामन्तो भूयास्त्वमा प्रतिष्ठायास्तिस्मश्च प्रतिष्ठस्य भूया यो अस्मान्यश्रियन्त पयं विश्वः शान्तरजौ शान्तरविहशान्तरवान्तरविहा शान्तरग्निशान्तरवायुः
कृष्णैजाहन्धनामि वहाविवच्छतुष्पदस्माकं सर्वमस्मनादुरम् परिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थेते दिवात्मनंगाय दृश्ये प्रत्यस्वहद्भिः अस्य प्राणादवानत्यङ्गस्तनिरोधना यक्षन्महिषस्वः तत्त्वा क्रुद्धः परममन्यनाजलवत्याः सुकल्पमग्ने दत्तमपुनस्तोज्जीवयामसे यच्चे मन्यपरोक्तस्य पृथिवीमुनदद्वदे आदित्या विश्वे तद्देवा वसवश्च समाभरन् अनाध्योतरजुषदामाद्यं विच्छिन्नं यज्ञकं सन्मुन्दधागो बृहस्पतिस्तमदानमन्नो विश्वे देवायमानयन्द महावोर्षद्धनिता यस्मैजाहन्धनामिवः विपच्चतुष्पदस्माकं सर्वमस्वनादराम् मावाहयामि ओम सुबहाय मावाहयामि ओम गोर्भवस्वहाय हिरण्यगर्भमावाहयामि वाहनं
इंद्रमावाहयामि ओम भवः सजिनमावाहयामि ओम भवः सचीपतिमावाहयामि ओम भवस्वः जगत्कृतमावाहयामि ओम इंद्रादिभ्यो नमो नमः इदमिदमासनम् ओम वाहयामि ओम भवः वैवस्वतमावाहयामि ओम सुवः पितृपतिमावाहयामि ओम भवस्वः धर्मराजमावाहयामि ओम यमादिभ्यो नमो नमः इदमिदमासनम् ओम भौः ओम वर्णमावाहयामि ओम भवः प्रदेशसमावाहयामि ओम सुवः स्वरूपिणमावाहयामि ओम भवस्वः प्रतिमावाहयामि वरुणादिभ्यो नमो नमः इदमिदमासनम् ओम भौः उत्तरपालिकायाम् ओम सोममावाहयामि ओम भवः इन्दुमावाहयामि ओम सुवः ओम शासनमावाहयामि ओम भवस्वः ओषधीशमावाहयामि ओम सोमादिभ्यो नमो नमः इदमिदमासनम् स्तयोः आसनार्थे सदान् समर्पयामि पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि स्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि कालविन्देषुद्ध्याजमनीयं माधवनीयं समर्पयामि मधुवर्गं कल्पयामि भवस्वः तां समर्पयामि स्नानानन्दं समर्पयामि समर्पयामि गन्धान् धारयामि गन्धस्य समर्पयामि पुष्पमालिकां कल्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओम हणे नमः ओम चतुर्मुखाय नमः ओम प्रजापतये नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः ओम इंद्राय नमः ओम वज्रणे नमः ओम शतक्रतवे नमः ओम शरीपतये नमः ओम नमः वैवस्वताय नमः ओम पितृपतये नमः ओम धर्मराजाय नमः ओम वरुणाय नमः ओम नमः स्वरूपिणे नमः पाम्बरये नमः ओम इन्दवे नमः ओम निषादराय नमः ओषधीशाय नमः दिव्यधराय नमः ओम नानाविधः परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ओम धौरसुधर्वधर्वं गन्धर्वदयस्नां धौरवतिगन्धर्वयं वयं धौरवमः ब्रह्मादिभ्यो नमो नमः धूपमाग्रापयामि पन्नाग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडोभयासि श्रेष्ठाः यजिष्ठः वह्नितमस्योजनोष्वा देहाकं सिद्धमुभ्यस्पदे वरुणाय नमः स्थापित ओम वरुणाय नमः ओम दीपं ओम पन्नाग्निवरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडोभयासि श्रेष्ठाः यजिष्ठः वह्नितमस्योजनोष्वा देहाकं सिद्धमुभ्यस्पदे वरुणाय धूमः दीपं दर्शयामि दीपानन्दमालिनीं समर्पयामि ओम भवस्वः ओम ब्रह्मणे स्वाहा आराधिता ब्रह्मादिभ्यो नमो नमः दाशक्तिकर्ले प्रत्ययं ताम्बूलहितं निवेदयामि निवेदनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि मध्यं प्रमाण्यानि नमस्तोपचारान् परिकल्पयामि ओम पिताविराजमृषभारयेन मन्तरिक्षं विश्वरूपाविवेशः समर्थैरभ्यर्त्यं दिवत् अजनजत् आरात्रिकं सन्दर्शयामि आरात्रिकानन्तरं माधुर्यं समर्पयामि अर्घ्यं धारयामि ओम हराय नमः ओम देवात्रेकानहास्त्रस्त्रजस्त्रगुंहाः भवदावत्रवर्त्मावत्रधुत्वाः यत्यामजरञ्जुहोने तन्मे समृध्यता येना भवस्वः जगधादनामहेरणायज्ञदेजवश्रतमोरसत्वस्य भागेदेहनः श्रीममातरः तस्मारङ्गमामवश्यक्ष्या जन्मभापोदनेधाजनः हिरण्यवर्णासुजपाभगायादिवादकशुतोयास्मिन्द्रः यागर्भन्तिकरे विरूपास्तानापश्यन्ति राजावरणोजादिमध्ये सत्याग्रेव पश्यन्यनानामधतिकशुतोजापाभगास्तान् सोनाभवन्दो जघान् देवादिविर्मुक्तिभक्षयान्तरक्षेपगधा भवन्त्यया पृथिवीम्
सहस्रास्तानापशक्तस्योना भवन्तो शिवेरमादित्या प्रसदापश्रियादनोपसुतस्पजम्ने सर्वागम् अद्युगम् रत्सुतो नक्षबलमाजनदत्ता भवस्व वा
கற்பூரார்ப்பணம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு. இதிலே நம்ம கல்யாணம் மற்றும் இந்த மாதிரி மங்கள நிகழ்ச்சிகளில் இது நாற்று விடுறது அப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு நம்ம கிராமங்களில் கூட இந்த வழக்கம் உண்டு. இது வேதோக்தமான ஒரு ஆபஸ்தம்பரை சொல்லக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு. இதிலே பிரம்மா மற்றும் இந்திரன், யமன் மற்றும் வருணன், சோமன் இவர்களெல்லாம் பிரார்த்திக்கப்படுகிறார்கள். இந்த கும்பாபிஷேகம் பரியந்தம் இந்த திக்குகள்லாம் தேவதைகள்லாம் நம்மளை காப்பாற்றி இது 4வது நாள் நதிகளில் கொண்டு போய் விடுறது. இதில் ஓஷதி சுக்தம் என்று இசைக்கப்படுகிறது. இது இயற்கை பற்றி சொல்கிறது. ஸோ இந்த நமக்கு தெரிஞ்ச பிரகாரம் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தாவரத்திலே ஆகாரம் அதனாலே நிகழ்கிறது, சூரியனாலே ஏற்படுகிறது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஆனால் வேதம் இன்னொரு விஷயத்தை சொல்கிறது. ஓஷதிகள் மற்றும் வனஸ்பதிகளுக்கெல்லாம் அதுக்குள்ளே இருக்கிற சுவை, அந்த சுவைக்கக்கூடிய தன்மை, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சுவை இருக்குது இல்லையா? வேப்பம்னா ஒரு கசக்கிறது, மாம்பழம்னா இனிக்கிறது. அப்படி அந்த சுவையை ஏற்படக்கூடிய தன்மை சந்திரனிடத்திலிருந்து வருகிறது. ஸோ அந்த ருச்சின்னு சொல்லக்கூடிய அது வேதம் சொல்லுகிறது. ஸோ அந்த சோமரா அவர்களுக்கெல்லாம் ராஜாவெல்லாம் சோமன் என்று சொல்லக்கூடிய சந்திரனிடத்திலே பிரார்த்தனை பண்ணுவார்கள். யார் வளர்க்கிறார்களோ போஷிக்கிறார்களோ அவர்களை நாம் காப்பாற்றுவோம். ஸோ இயற்கை சுற்றுச்சூழல் நாம் காப்பாற்ற வேண்டியது இருக்கிறது. ஒரு மரமோ ஒரு செடியோ வெட்டணும்னா கூட நம்ம யோஜனை பண்ணி 302 மரம் 300 இடத்துல மட்டும்படியாக சாஸ்திரம் சொல்லுது. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பிரார்த்தனை. அடுத்ததாக ரக்ஷாபந்தனம், அப்புறம் பிரதான வேதிக்கையில் பூஜை. ஓம் समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, मध्वर्गं कल्पयामि, भूर्भुवस्सुवो भूर्भुवस्सुवो भूर्भुवस्सुवः स्नापयामि, स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि, वस्त्रोत्थयवर्णार्थे विलेपनार्थे दिव्यश्रीपरिमलगन्धान् धारयामि, गन्धस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमं तदुपरि अक्षतान् समर्पयामि, पुष्पमालिकां समर्पयामि, पुष्पैः पूजयामि। ओम अनंताय नमः, ओम आस्त्यै नमः, ओम दक्षकाय नमः, ओम कारकोटकाय नमः, ओम गुलिकाय नमः, महापद्माय नमः, पद्माय नमः, अष्टकलनागदेवताभ्यो नमः, दिव्यचरणारविन्दयोः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि, द्वाविमौ वादोवादाद्घोरापराप्तः दक्षम्यज्ञावादपराज्ञोवादयत्रपः धूपमाघ्रापयामि, धूपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि।
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुख विश्वतो हस्तमुत विश्वतस्पादसम्पदत्रयर्यावापृथिवीजनयन् देव एकः मंगलदीपं दर्शयामि दीपानन्तरम् आचमनीं समर्पयामि नैवेद्यं गायत्र्याः प्रोक्ष ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा पानाय स्वाहा ॐ ज्ञानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे स्वाहा अनन्तादि अष्टकुलनागमण्डलदेवताभ्यो नमः यथाशक्ति फलानि निवेदयामि निवेदनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि मध्ये मध्ये अमृतपानीयादि समस्तोपचारान् कल्पयामि ॐ इदगं सर्पेभ्यः विरस्तु जुष्टम् आश्रयः हे गोर्चाग्रेरक्षान् घोरानिधिघर्मविघाजनः पामर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् साफल्यं गुरुकर्मणेषा समुद्भूता शाखाया फलवद्वजः स्मान् कुम्भेष्प्रयामि सर्वदोषापणतेनालिकेरसमुद्भूता दनेत्रसंमिता शकयादृतं सर्वं पापं पीडाञ्चमेन दा सर्वे समुद्रासृतस्तीर्थानि दाहृदाः आयान्ते पूजार्थं दुर्दक्षयकारकाः ॐ वरुणावाहनम् ॐ इमं मे वरुणस्य देहवमद्याजमडय स्वामस्य राजके रत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानदाः सेजमानभिर्भिः अहेडमानो वरुणेः बोद्धर्षकं समानाय प्रमोषीः गोर्भवस्वरं येषु कुम्भेषु आसु प्रतिमासु च सकलतीर्थाधिपतिं वरुणं ध्यायामि वरुणमावाहयामि वरुणस्य इदमासनं वरुणाय नमः सकल आराधनैः सुवर्चितम् आधारशक्त्यै नमः ॐ पाशाङ्कुश त्रिशूल कपालधारिणे आधारशक्त्यै नमः आदिकूर्माय नमः कूर्मासनाय नमः अनन्तासनाय नमः ॐ अनन्ताय नमः वासुक्यै नमः तक्षकाय नमः कार्कोटकाय नमः गुलिकाय नमः शङ्खपालाय नमः पद्माय नमः महापद्माय नमः सिंहासनाय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः अधर्माय नमः अज्ञानाय नमः अवैराग्याय नमः अनैश्वर्याय नमः योगासनाय नमः कृतयुगाय नमः त्रेतायुगाय नमः द्वापरयुगाय नमः ॐ कलियुगाय नमः ॐ कर्णिकामध्ये द्वादशकलात्मने आदित्याय नमः तपिन्यै नमः तापिन्यै नमः धूम्रायै नमः मरीच्यै नमः ज्वालिन्यै नमः वृच्यै नमः सुषुम्नायै नमः भोगदायै नमः
ఓం విశ్వాయై నమః బోధిన్యై నమః ఓం ధారిణ్యై నమః ఓం క్షమాయై నమః కర్ణికాमध्ये ఓం షోడశకలాత్మనే సోమాయ నమః ఓం అమృతాయై నమః ఓం మానదాయై నమః ఓం పూషాయై నమః ఓం తుష్ట్యై నమః ఓం పత్పుష్ట్యై నమః ఓం రత్యై నమః ఓం ధృత్యై నమః ఓం శశిన్యై నమః ఓం చంద్రికాయై నమః ఓం కాంత్యై నమః ఓం జ్యోత్స్నాయై నమః ఓం శ్రియై నమః ఓం ప్రీత్యై నమః ఓం అంగదాయై నమః అథ విమలాసనాయ నమః ఓం అష్టమాసిద్ధ్యై నమః అణిమాసిద్ధ్యై నమః లహిమాసిద్ధ్యై నమః ఘరిమాసిద్ధ్యై నమః మహిమాసిద్ధ్యై నమః ఏహిత్వసిద్ధ్యై నమః వశిత్వసిద్ధ్యై నమః ప్రాకామ్యసిద్ధ్యై నమః ప్రాప్తిసిద్ధ్యై నమః పీఠमध्ये కర్ణికాमध्ये విశకలాత్మనే ఆదిత్యాయ నమః ఓం ధూమ్రార్చిషే నమః ఓం ఉష్మాయై నమః ఓం జనిన్యై నమః ఓం జ్వాలిన్యై నమః ఓం విస్ఫులింగిన్యై నమః ఓం సుశ్రియై నమః ఓం స్వరూపాయై నమః ఓం కపిలాయై నమః ఓం హవ్యవాహిన్యై నమః ఓం కవ్యవాహిన్యై నమః ఓం పీఠదేవతాం ధ్యాత్వా ఓం వామాయై నమః ఓం జ్యేష్ఠాయై నమః ఓం శ్రేష్ఠాయై నమః ఓం రౌద్ర్యై నమః ఓం కలవికరణ్యై నమః ఓం బలవికరణ్యై నమః ఓం బలప్రమథిన్యై నమః సర్వభూతమన్యై నమః మధ్యే మనోన్మన్యై నమః పురాణం ఏన పూతస్తరతి దుష్కృతాని తేన పవిత్రేణ శుద్ధేన పూతాః అతిపాప్మానమరాతిందరేమ లోకస్య ద్వారమర్చిమత్పవిత్రం జ్యోతిష్మద్భ్యాజమానం మహస్వతే అమృతస్య ధారా బహుధా దోహమానం చరణన్నో లోకే సుధితాన్ దధాతు భూర్భువస్వరోమస్మిన్ ప్రధానకుంభే సర్వదేవాత్మక స్వరూపం సర్వాత్మానం యుగ అవతారషం పరమాత్మానం శ్రీ సత్సాయీశ్వర దివ్యమణి శ్రీపాదదేవతాం ధ్యాయామి ఆవాహయామి ఓం హేజనేభ్యः अस्माकमस्तु केवलः आवाहयामि अग्निन्दोतं मणिमहे होतारं विश्वेरसमस्यज्ञसुकृतं दामि आवाहयामि यमाय सोमहं जगदयमाहयूतोऽभिगच्छत्यग्निदूतारं कृतः एवं लोकपालं ध्यायामि आवाहयामि ओषणपरापराणुदृढणावृतप्रतिष्ठायाथापूर्भूस्रं नृतिं लोकपालं ध्यायामि आवाहयामि एवमे वरुणशदिह्यमुद्याजमणयाद्वामस्रादिगत्वा ब्रह्मणान्दमासास्तेजमानवर्भिः अहेडमानवरणेः बोद्धृङ्गमानयुप्रमोहीपूर्भूस्रं मृणं लोकपालं ध्यायामि आवाहयामि तोवावरस्पतिष्ठुर्यामातृभ्यावां स्यावरणिमहे ओं पूर्भूस्रं वायुं लोकपालं ध्यायामि आवाहयामि तमेहा ओं सोमो धेनुकं सोमर्वन्तमाशं सोम वीरं कर्मण्यं धातु साधनं मृत्युकं प्रधेयं वेदश्रवणं तस्मै पूर्भूस्रं सोम लोकपालं ध्यायामि आवाहयामि नमेहा नन्दगादस्तस्पतिं धियन्निन्मोहे वयं पूषानो यथा वेद संभिर्क्षापारद्धस्तये पूर्भूस्रं ईशानं लोकपालं ध्यायामि ओं शिंशिखराय नमः शिखरदेवतां परमेश्वरं ध्यायामि आवाहयामि दिव्यमणि श्रीपाददेवता नमः प्राणाः इह प्राणाः जीवाः इहैवसिकाः सर्वाणि वाङ्मनः तच्चक्षुः श्रोत्रदिक्वाघ्राण प्राणाभानव्यानोधान समानाति हैवागत्य सुखं जलं दृष्टं दुस्वाहा ओम सूनीते पुनरस्वा चक्षुप्रप्राणमहनो जयभोगं ज्योत्पश्येमा सूर्यमित्रं तप्रतें दयास्मस्ति अमृतं वै प्राणामप्रमापः प्राणानेव यथास्थानमपक्वयते प्राणामपदामि भोदिव्यमणिवारुकदेवताभ्यो नमः आहितो भव स्थापितो भव ఈ దిక్పన్న అవకుంఠితో భవ సుప్రీతో భవ సుప్రసన్నో భవ వరదో భవ ప్రసీద ప్రసీద స్వామి సర్వజగన్నాథ యావతే కుంభాభిషేక పర్యంతం తావతి ప్రీతిభావేర్యేషు కుంభేషు వాసు ప్రతివాసు చ సాన్నిధ్యం కురు కురు స్వాహా ఓం ప్రాణప్రతిష్ఠాదేవతాభ్యో
राज्यो भासो मे न यजते ते वसुवामेतानि हवीगुंषु भवन्ति ते तावन्तो वै देवानागुं सभाः तयेवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति तयेनं पुनः सुवन्दे राज्याय देवसूराजा भवति न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नियमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः तमेव भान्तमनभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति
नमस्तमस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनग् स्वाहा ॐ गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनग् स्वाहा ॐ गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनग् स्वाहा ॐ गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनग् स्वाहा गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनग् स्वाहा विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा क्लीं ग्लौं गङ्गणपतये परमपदसर्वजनन्यशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ ह्रीं क्लीं ग्लीं ग्लौं गङ्गणपतये परमपदसर्वजनन्यशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये परमपदसर्वजनन्यशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये परमपदसर्वजनन्यशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये परमपदसर्वजनन्यशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये परमपदसर्वजनन्यशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये परमपदसर्वजनन्यशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये परमपदसर्वजनन्यशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये परमपदसर्वजनन्यशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये परमपदसर्वजनन्यशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये परमपदसर्वजनन्यशमानय स्वाहा स्वाहा मूलमन्त्रात्मने महागणपतये नमः सर्वत्र महागणपतये नमः இந்த திருவடி ஆனது ஸ்ரீபாதம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த திருவடி சம்பந்தமானது இந்த பூமிக்கு எப்பொழுது ஏற்பட்டதுன்னா திரிவிக்ரம அவதாரத்திலே பாதோஸ்யேஹா பவாத் புனः இதம் விஷ்ணுர்விதக்ரமே த்ரேதா நிததே பதம் சமூடமஸ்ய பாகும் சுரே. இந்த பூமியினுடைய ஸ்பரிசம் அந்த திருவடிக்கு அந்த சமயத்திலே கிடச்சுதான். பிறகு பல அவதாரங்கள் நிகழ்ந்து நமக்கு திருவடி சம்பந்தம் நமக்கு கிடைக்கப்பெற்றது. அதெல்லாம் நாம் புராணங்களில் பார்க்கிறோம், சாஸ்திரங்களில் பார்க்கிறோம். நமக்கு எல்லாருக்கும் அனுபவபூர்வமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வஸ்து பகவான் சத்சாய்நாதன். அவர் எங்கே இந்த இடத்துல அவருடைய திருவடி பட்ட சம்பந்தப்பட்ட இடம் இது. ஸோ எப்பொழுதும் நாம் பிரார்த்தனையில் சொல்வோம், பகவானுடைய அந்த சரணங்களுக்கு இடத்தை நம்மிடத்திலேயே பிரார்த்தனை இருக்க வேண்டும், நம்முடைய பக்தி ஏற்பட வேண்டும், நமக்கு திருடகாத்திரமான ஒரு பக்தி சேவையும் நமக்கு ஏற்பட வேண்டும் அப்படி என்று நாம் பிரார்த்திப்போம். அதன் பிரார்த்தனையினாக பகவான் இந்த நமக்கு இன்னைக்கு பகவானுடைய சரண அந்த பாத பிரதிஷ்டை, இது பாதுகை இல்லை, பாதுகை பாதம் ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்குது. பாதுகைன்னா பாதுகையை தாங்கக்கூடிய அந்த ஒரு கட்டை மரக்கட்டை மாதிரி இருக்கும், ஸ்வர்ணமயமாக இருக்கும். சுவாமி அதை பற்றி சொல்கிற தட்சிணாமூர்த்தி காலத்திலிருந்து பாதுகை ஆராதனை இருக்குது. இது பாதம், பகவானுடைய பாதம். அஷ்டதட கமலம், பின்னாடி ஒரு ஷோடசடதட கமலம், இப்படி அழகாக ஒரு சாஸ்திரபூர்வமாக நிர்மாணிக்கப்பட்டு இங்கே பிரதிஷ்டையாக போகிறது. ஸோ நம்ம உள்ளம் எப்படியும் வெள்ளையாக இருக்கணும், அந்த ஹிருதயத்தில் இந்த பாதத்தை நாம் ஆராதனை பண்ணணும். ஹிருதயத்திலே பகவானே எல்லாருக்கும் இந்த அனுபவம் தெரியும், பகவானுடைய பாதஸ்பர்ஷனம் பாத நமஸ்காரம் என்ற அனுபவம் நிறைய பேருக்கு இருக்குது நமக்கு. ஸோ அந்த பாதமானது சின்ன சின்ன பாதம், சிங்கார பாதம், மெல்ல மெல்ல நடந்து வரும் அழகு திருப்பாதம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பாதமானது இங்கே பிரதிஷ்டையாகி பெறுது. பகவானுடைய ஒரு நல்ல நாள் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மகான் உத்தமமான ஒரு நாள். இந்த நட்சத்திரம் திதி தசஹரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புதன்கிழமை. இந்த எது பண்ணாலும் அதுக்கு 1000 மடங்கு பலன். தசஹரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராதனை நிறைய நமக்கு பிராயசித்தமாக சாஸ்திரங்கள் நமக்கு விதித்துள்ளன.
ஸோ அந்தப்பட்ட நமக்கு ஒரு தெரிஞ்ச சாஸ்திரம் பகவானுடைய சேவை தான். அதை நாம் அனுபவபூர்வமாக இங்கே நாம் உணர்கிறோம், அதை நாம் ஆஃபர் பண்ணுறோம் பகவானுக்கு. ஸோ இந்த சரணம் பவித்ரம் விததம் புராணம், இந்த சரணமானது ரொம்ப பவித்திரமானது, ரொம்ப தொன்று தொட்டு இருக்கக்கூடியது. தான் சொன்னேன், திருவிக்கிரமாவதாரத்திலிருந்து பூமியை உத்தாரணம் பண்ணார் வராகம். ஆனால் பூமிக்கு ஒரே ஒரு திருவடி, அந்த ஒரு திருவடி தான் கயாலே நம்ம பார்க்கிறோம், அந்த ஏக திருவடி தான் அங்கே பூமிக்கு. ஆனால் இங்கே 2 திருவடியாக நமக்கு கருணை கூர்ந்து பகவான் இங்கே நமக்கு பிரதிஷ்டை ஆகிறார். விததம் புராணம் ஏன பூதஸ்தரதி துஷ்கிருதானி, அது நம்மளை புனிதப்படுத்துகிறது. அதுவும் புனிதமாக இருக்கிறது தான் நம்மளை புனிதப்படுத்துகிறது. நம்ம செய்திருக்கக்கூடிய பாவச் செயல்களுக்கெல்லாம் நீக்குகிறது. துஷ்கிருத்தம்னா எத்தனையோ ஜென்மங்களில் ஜென்மாபியாசாது ஜென்ம பிரபதின்னு சொல்லி எத்தனையோ துஷ்கிருதம், அதையெல்லாம் நம்மளை புனிதப்படுகிறது. ஏன பூதஸ்தரதி துஷ்கிருதானி தேன பவித்ரேன சுத்தேன பூதாக, அதனால் நாம் பவித்திரமாகி சுத்தமாகி பூதம், பவித்திரம் சுத்தம் பூதம் 3 சொல்லியிருக்கு. 3 சரீரத்துக்கு சொல்லியிருக்கு. வெளியில் இருக்கக்கூடிய சரீரம் பவித்திரம், சுத்தமானது ஹிருதய சுத்தம், பூதம்ங்கிறது ஆத்மசுத்தி. இதெல்லாம் பவித்திரம். அதி பாப்மா நபராதிந்தரேம, லெட்டஸ் கிராஸ் ஓவர் திஸ் சம்சாரா, ஆர் பாபத் கடலிலே நாம் கடைவோமாக. அதி பாப்மா நபராதிந்தரேம லோகஸ்யத்வாரபர்ச்சிபத் பவித்ரம், இந்த லோக ஜனங்கள்னால எல்லாராலையும் நன்றாக பூஜிக்கப்பட்டதும் ஜோதிஷ்பத் பிராஜமானம் மஹஸ்வதே, ஜோதிஷ்பத்து பெருமொழியாய் திகழ்வதும் மகத்தத்துவமாக இருக்கக்கூடியதும் அமிர்தஸ்ய தாரா பகுதா தோஹமானம், அமிர்த தாரையிலே நன்றாக தோய்க்கப்பெற்றதும். என்ன திருவிக்கிரமாவதாரத்திலே பிரம்மா அந்த கமண்டலினாலே அந்த தீர்த்தத்தை அபிஷேகம் விடுறான். அந்த தீர்த்தம்தான் பரமேஸ்வருடைய ஜட்டா ஆகி பாகீரதியாக கங்கையாக அன்றைக்கி தசஹாரா. அதுக்கு தான் சொல்ல வரேன், இந்த கங்கைக்கு இன்றைக்கி சம்பந்தம் இருக்குது. கங்கையினுடைய அவதார நாள் சில இடத்துல உண்டு. இன்றைக்கி கங்கா பூஜை சொல்லியிருக்கு, கங்கை பூஜை விசேஷமாக சொல்லியிருக்கு இன்றைக்கி கங்கை. ஸோ இந்த நமக்கு திருவடி, இந்த ஷிரடி பாபா அவதாரத்திலையும் தெரியும், அந்த திருவடியிலேருந்து கோதாவரி பெருகித்து கங்கை பெருகித்து அந்த சரித்திரம் நம்ம நம்முடைய பகவானிடத்திலே நமக்கு எல்லாமே பெறுகிறது. கங்கை மட்டுமா, சமஸ்தமும் சர்வலோகமும் அந்த இடத்திலே நாம் இருக்கிறதை நாம் உணர்கிறோம். ஸோ அந்த தசஹாரா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நன்னை நாளிலே நாம் பகவானுடைய சரணத்தை மறுபடியும் அமிர்தஸ்ய தாரா பகுதா தோஹபான், அமிர்த தாரையினாலே நன்றாக தோய்க்கப்பெற்றது. அமிர்தஸ்ய தாரா பகுதா தோஹமானம் சரணன்னோ லோகே சுதிதான் ததாது, இந்த சரணமானது எங்களுக்கு நல்ல புத்தியை தரட்டும். தியோயோ நஃப் பிரச்சோதயாத், நல்ல மார்க்கத்தை நல்ல வழியை நமக்கு காண்பிக்கட்டும் என்று பிரார்த்தனையாக இந்த மந்திரம் அமைகிறது. அதனாலே இப்பொழுது ஹோமம். ஓம் எல்லாரும் நமக்கு நல்ல புத்தி வரணும், நல்ல இந்த திருவடி இடத்திலே நம்மிடத்திலே நல்ல பக்தி கிடைக்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனை. ஓம் சரணம் பவித்ரம் விததம் புராணம் ஏன பூதஸ்தரதி துஷ்கிருதானி தேன பவித்ரேன சுத்தேன பூதாः அதிபாப்மானமராதிந்தரேம ஸ்வாஹா லோகஸ்ய த்வாரமர்ச்சிமத் பவித்ரம் ஜோதிஷ்மத்யாஜமானம் மஹஸ்வதே அமிர்தஸ்ய தாரா பகுதா தோஹமானம் சரணன்னோ லோகே சுதிதான் ததாது ஸ்வாஹா சரணம் பவித்ரம் விததம் புராணம் ஏன பூதஸ்தரதி துஷ்கிருதானி தேன பவித்ரேன சுத்தேன பூதாः ஆத்மானமராதிந்தரேம ஸ்வாஹா லோகஸ்ய த்வாரமர்ச்சிமத் பவித்ரம் ஜோதிஷ்மத்பாஜமானம் மஹஸ்வதே அமிர்தஸ்ய தாரா பகுதா தோஹமானம் சரணன்னோ லோகே சுதிதான் ததாது ஸ்வாஹா சரணம் பவித்ரம் விததம் புராணம் ஏன பூதஸ்தரதி துஷ்கிருதானி தேன பவித்ரேன சுத்தேன பூதாः அதிபாப்மானமராதிந்தரேம ஸ்வாஹா லோகஸ்ய த்வாரமர்ச்சிமத் பவித்ரம் ஜோதிஷ்மத்பாஜமானம் மஹஸ்வதே அமிர்தஸ்ய தாரா பகுதா தோஹமானம் சரணன்னோ லோகே சுதிதான் ததாது ஸ்வாஹா சரணம் பவித்ரம் விததம் புராணம் ஏன பூதஸ்தரதி துஷ்கிருதானி தேன பவித்ரேன சுத்தேன பூதாः அதிபாப்மானமராதிந்தரேம ஸ்வாஹா லோகஸ்ய த்வாரமர்ச்சிமத் பவித்ரம் ஜோதிஷ்மத்பாஜமானம் மஹஸ்வதே அமிர்தஸ்ய தாரா பகுதா தோஹமானம் சரணன்னோ லோகே சுதிதான் ததாது ஸ்வாஹா சரணம் பவித்ரம் விததம் புராணம் ஏன பூதஸ்தரதி துஷ்கிருதானி தேன பவித்ரேன சுத்தேன பூதாः அதிபாப்மானமராதிந்தரேம ஸ்வாஹா சரணம் பவித்ரம்
ज्योतिष्मद्भ्राजमानं महस्वते अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानं चरणन्नो लोके सुधितां दधातु स्वाहा चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन भूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूताः अतिपाप्मानमरातिन्दरेम स्वाहा लोकस्य द्वारमर्चिमत्पवित्रं ज्योतिष्मद्भ्राजमानं महस्वते अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानं चरणन्नो लोके सुधितां दधातु स्वाहा पुराणं येन भूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूताः अतिपाप्मानमरातिन्दरेम स्वाहा लोकस्य द्वारमर्चिमत्पवित्रं ज्योतिष्मद्भ्राजमानं महस्वते अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानं चरणन्नो लोके सुधितां दधातु स्वाहा चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन भूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूताः अतिपाप्मानमरातिन्दरेम स्वाहा लोकस्य द्वारमर्चिमत्पवित्रं ज्योतिष्मद्भ्राजमानं महस्वते अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानं चरणन्नो लोके सुधितां दधातु स्वाहा चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन भूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूताः अतिपाप्मानमरातिन्दरेम स्वाहा लोकस्य द्वारमर्चिमत्पवित्रं ज्योतिष्मद्भ्राजमानं महस्वते अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानं चरणन्नो लोके सुधितां दधातु स्वाहा चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन भूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूताः अतिपाप्मानमरातिन्दरेम स्वाहा लोकस्य द्वारमर्चिमत्पवित्रं ज्योतिष्मद्भ्राजमानं महस्वते अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानं चरणन्नो लोके सुधितां दधातु स्वाहा चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन भूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूताः अतिपाप्मानमरातिन्दरेम लोकस्य द्वारमर्चिमत्पवित्रं ज्योतिष्मद्भ्राजमानं महस्वते अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानं चरणन्नो लोके सुधितां दधातु स्वाहा विततं पुराणं येन भूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूताः अतिपाप्मानमरातिन्दरेम स्वाहा लोकस्य द्वारमर्चिमत्पवित्रं ज्योतिष्मद्भ्राजमानं महस्वते अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानं चरणन्नो लोके सुधितां दधातु स्वाहा पवित्रं विततं पुराणं येन भूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूताः अतिपाप्मानमरातिन्दरेम स्वाहा लोकस्य द्वारमर्चिमत्पवित्रं ज्योतिष्मद्भ्राजमानं महस्वते अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानं लोके सुधितां दधातु स्वाहा चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन भूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूताः अतिपाप्मानमरातिन्दरेम स्वाहा लोकस्य द्वारमर्चिमत्पवित्रं ज्योतिष्मद्भ्राजमानं महस्वते अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानं चरणन्नो लोके सुधितां ददातु स्वाहा पवित्रं विततं पुराणं येन भूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूताः अतिपाप्मानमरातिन्दरेम स्वाहा लोकस्य द्वारमर्चिमत्पवित्रं ज्योतिष्मद्भ्राजमानं महस्वते अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानं चरणन्नो लोके सुधितां दधातु स्वाहा पवित्रं विततं पुराणं येन भूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूताः अतिपाप्मानमरातिन्दरेम स्वाहा लोकस्य द्वारमर्चिमत्पवित्रं ज्योतिष्मद्भ्राजमानं महस्वते अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानं चरणन्नो लोके सुधितां दधातु स्वाहा चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन भूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूताः अतिपाप्मानमरातिन्दरेम स्वाहा लोकस्य द्वारमर्चिमत्पवित्रं ज्योतिष्मद्भ्राजमानं महस्वते अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानं चरणन्नो लोके
सुधितान् दधातु स्वाहा ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्विजं होतारं दधातामहं ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ईशत्वार्यत्वावायवस्थो वस्य पिता प्रार्पयतो श्रेष्ठतमाय कर्मणाप्यायुध्वमग्नया भागमोर्जस्वतेः प्रजस्पतेः प्रजापतिर्णमेव यक्ष्मामावस्ते रजीषतमाघजगुंसो हेतुः परिभवणक्तुध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वेर्यजमानस्य पशो पाहि ओम ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् अग्नाय हि वीतये सत्यबर्हिषे ओम ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् अन्नो देवीनभीष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रावन्तु नः ओम ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् मित्रमः आरोहन्नुत्तरान्दिवम् रुद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय सुखेषु मे हरिमाणम् रोपणाकासु दध्मसि अतो हरिद्रवेषु मे हरिमाणं निदध्मसि उदगानगमादित्यः विश्वेन सवसा सह दुषन्तं मम रन्धयन् मोहं दुषतोरधाम् ॐ ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृतसूर्य विश्वनाभाजिरोचनम् उपयामगृहीतोऽसि सूर्यायद्वाभ्याजस्पतये सूर्यायद्वाभ्याजस्पते ॐ ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ओम ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् आदित्यो न प्रभावात्यक्षरं मधुक्षरं तिरुद्रसं सत्यं वै तद्रसमापो ज्योतिरसोऽमृतं मवोर्भवस्वरोम ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ओम ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् चक्षुश्रात्रमात्मामनोमन्यरमनरुमित्यः सत्यमित्र रागाशः प्राणो लोकपालः किङ्कन्दत्सत्यवन्नमूर्तो जीवो विश्वकरमस्वयम्भब्रह्मैतदमृत एष पुरुष भूतानामधिपतिर्ब्रह्मणः सायुज्यकं सलोकतामाप्नोत्येतासामेव देवतानागुं साक्षितागुं समानलोकतामाप्नोत्यजेवं वेदेत्युपनिषत् ॐ ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् वर्तमानो निवेहयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सवितार्थेन पश्यन्ने अग्निन्दोतं वृणीमहे होदारं विश्वेरसाम् अस्य यज्ञस्य सुकृतं येषामीशे पशुपतिपशोन चतुष्पदामृतद्विपदां निष्क्रीतो जञ्जज्ञेयं भागमेतु राजस्पर्शाय समानस्य सन्तो ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् आप्यायस्व समेतु विश्वदस्समवृष्णयं भवाय संगते अप्सुमे सोमो ब्रवीरन्तर्विश्वानि भेषज अग्निं च विश्वशम्भवमापश्च विश्वभेषजीः गौरीमिमाय सल्याणदक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूषि सहस्राक्षरा परमेव्यमन् ओम ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ओम
भगवत्पदे प्रसव्यायाम् अपागं रेदागं सुजन्वते चोना पृथिवी भवानक्षरा निवेशनी यच्छान शर्म सप्रथाः क्षेत्रस्य पतिनाभजगं हतेनेव दयामसि कामश्वम्भो हेतुर्वाहरणो मृडादीदृशे सा ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ सा ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि ॐ प्रचोदयात् बुद्बुद्धस्वाग्ने विरजारिक्येनमिष्टापोर्ते सुखं दृजेथामयञ्च भगस्वामिदरञ्यवानमन्वादागं हेत्वजन्तु वेदं निदं विष्णुर्वचक्रमे त्रेधानतदेवतां तमस्य भागं सुरे ॐ सा विष्णोराडमसि विष्णा पृष्ठमसि विष्णाश्चत्रे स्थ विष्णु ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ सा ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ सा ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् बृहस्पते अतियदर्योर्हाद्युमद्विभाति कृतमज्जनेषु यदेदयच्छवसत्तप्रजात तस्मासु द्रविणन्धे चित्रम् इन्द्रभरत्मह्य पाहि सामन्यथाचार्याते अपि वत्सुतस्य प्रणीतितवशूरशर्मन्नाभिभासन्ति कवयस्सु यज्ञाः ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः स्वबुद्ध्यापमास्य वेष्ठा सतश्च जोनिमसतश्च विवः ॐ सा ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ सा ईश्वराय विद्महे देवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ओम प्रस्क्रन्ते अन्यदन्ते अन्यरूपे अनिजौरिवासे विश्वाहि माया अवसिस्वधावो भद्रादे पुषन्निरादिरस्तो प्रविशुक्राय भानवे भरत्वकं हव्यमतीं चाग्नगे सपोदं यो दैव्यानि मानिषाजनो गश्यन्तर्विश्वानि विद्युनाजिकानि इन्द्राणि मासुनानि ऋषपत्नी मगवश्रवं नह्यस्य अपरञ्जनिर्सामरदेपतिः इन्द्रं वो वष्परस्परि हवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः ॐ सा ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ सा ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् शमग्निरग्निभिस्करश्चन्नस्तवतु सूर्यः संवातो वाक्परपा अपशुधः शन्नो देवीर्भिष्टकामो भवन्तु पीतये शय्योर्भिश्ववन्तु नः ओम सा ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ओम सा ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् यया नक्षत्रा भवदूती सदा वृधः सखा या सजिष्ठया व्रता आयङ्गौ पृष्टिरक्रमीरसनन्मातरं पुनः पितरं च प्रजान् सुवः यत्ते देवे नररतिरावबन्धसामग्रीवास्तु सत्यम् इदं तद्विश्याम्यायुषाणमध्याददा जीवः पितृमध्ये प्रमुक्तः ॐ सा ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ सा ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां ऋषिप्राणां महिषमृगाणां शेनोर्धानागस्वदर्वनानागं सोमपवित्रवत्येन्द्रेभन्ये सचित्रचित्रं चितगेदमस्मै चित्रक्षत्रचित्रतमं योधा चन्द्रं मृगिं पुरवीरं बृहन्तं चन्द्रनिन्द्राविर्गणतयवस्व ॐ सा ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ सा ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् जातवेदः सनः परिषदति दुर्गान् विश्वानावेव सिन्धुन्दुरितात्यग्निः हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः प्रणो देवी सरस्वती वाजे भर्वाजिनीवती धीनामित्रीवतो सा ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ सा ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वमयविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः ॐ ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ सा ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् नमो नमाप्याय हरिवो वर्धमानः यदा स्तोत्रभ्यो महि गोत्रारजासि भोजिष्ठभाजो अधते स्याम ब्रह्म प्रावादिष्मदन्नो माहासीत् ॐ सा ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ
இப்போது சர்வத்தோபத்ர மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இங்கே மண்டலம் இங்கே போட்டிருக்கு. அதிலே பத்ரம்னா மங்களம்னு அர்த்தம். பத்ரம் அப்படின்னாலே மங்களம்னு அர்த்தம். பத்ரங்கர்ணே பிருணியா நல்லது. நம்ம சுவாமி சொல்லுவார் சி குட் பி குட் டூ குட், இதெல்லாம் வேதத்தில் சொல்லிருக்கு. பத்ரம் கரண் முதல்ல நல்லதே கேளு நல்லதே பாரு, வேதம் இதுதான் சொல்கிறது. அதுதான் நம்ம பகவான் நமக்கு ஒரு அறிவுரையாக சொல்லியுள்ளார்கள். ஸோ அந்த பத்ரமானது அந்த பத்ரமண்டலத்தில் நிறைய தேவதைகள் சொல்லிருக்கு. ஏகம் சத் விப்ராஹா பகுதா வதந்தி, எத்தனை சொன்னாலும் பரமாத்மா ஒன்று தான் நமக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார்கள். இனம் மதம் எல்லாம் கடந்த ஒரு தத்துவமாக நம்ம பகவான் விளங்குகிறார்கள். ஸோ அந்த பரமாத்மாவுக்கு இந்த சர்வதோபத்ர மண்டலையில் ஆராதனையாக நாம் இங்கே ஆகுதிகள் அளிக்கப்படுகிறது. ஓம் ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतस्सुरजो वेनावः सबुद्ध्यजापमास्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः ब्रह्मणे नमः स्वाहा आप्याजस्व समेतु ते विश्वतः सोमवृष्णिजं भववाजस्य सङ्गथे ॐ सोमाय नमः स्वाहा तमीशानञ्जगातस्तस्तु बृहस्पतिं धिकञ्चिन्मवासे होमहे वगं पूषानो यथा वेदा सामसत्प्रधे रक्षितापायदब्धस्वस्तये ईशानाय नमः स्वाहा इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः ॐ इन्द्राय नमः स्वाहा अग्निन्दोतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसाम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् ॐ अग्नये स्वाहा यमाय सोमगुं सुनत यमाय जुहदाभिः यमगुं ह यज्ञो गच्छद्यग्निदोतो अलङ्कृतः ॐ यमाय नमः स्वाहा ॐ मोषणः परापरा निर्रेतदुर्हणावतीष्णदृष्णायासः ॐ निरृतये नमः स्वाहा ॐ इमं मे वर्णश्रुधेहवमद्याचमृडय वामवस्युराजके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तरहास्ते गजमानो हविर्भिः अहेणमानो वर्णेह बोध्यर्षुन्दमानायुः प्रमोषीः ॐ वरुणाय नमः स्वाहा तपवाय प्रतस्पदे तुष्टुर्जामादरुद्भुता वां ध्यावृणीमहे ॐ वायवे नमः स्वाहा ॐ अष्टवसुभ्यो नमः स्वाहा ॐ रुद्राणादित्यान् मरुदोदधाध्यान् नृभो निक्षाणगन्धर्वागिश्च पितरेगिश्च विश्वान् मृगन् सर्पागिश्चाङ्गिरसोद सर्वान् कुटुमुत्वा स्वायुष्यामहयाम शश्वते ॐ अष्टवसुश्च जातवेदाश्च सहोजाजिरा प्रभुः वैश्वानरो नर्यापाश्च पंक्तिनाथाश्च सप्तमः इति विसर्पे मोष्टमग्नीनां ये तेष्टौ वसवः क्षिता इति ॐ अष्टवसुभ्यो नमः स्वाहा त्वमग्ने रुद्रो असुरो महादिवस्तकं शर्धो मारुतं वृक्षजीषे त्वं वातैररुणैर्याशशङ्गयस्त्वं पूषा विदधःपासिनुत्मना ॐ एकादश रुद्रेभ्यो नमः स्वाहा आसत्य नरजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सवितार्थेन देवो याति भवना विपश्यन् ॐ द्वादशादित्येभ्यो नमः स्वाहा ॐ ब्रह्मणवज्जहार प्राणेश्वरकृतिवाहा पिनाके ईशानो देवस्नायुर्दधार तस्मै हविषा हृदेन स्वाहा ॐ अश्विद्वयाय नमः अश्विद्वयेभ्यो नमः स्वाहा ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यः ॐ सपैतृक विश्वे देव नमस्कारो हि पितॄणां नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरश्चुष्माय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरस्वधायै नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरो घोराय पितरो नमो वः ॐ सपैतृक विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॐ यक्षः योम यक्षाय नमः स्वाहा इदकं सर्पेभ्यः हविरस्तु दुष्टम् आश्रेषायेषामनिगन्तितेतः ते अन्तरिक्षं पृथिवीं क्षयन्ति तेन सर्पासो हवमागमिष्ठाः अष्टकुलनागेभ्यो नमः स्वाहा गन्धर्वाप्सरसश्चोदतिष्ठन् विपुरुषो परापतन् ताभ्यो सुरारक्षागंसि पिशाचाश्चोदतिष्ठन् ॐ गन्धर्वाप्सरेभ्यो नमः स्वाहा अग्निर्होतानो अध्वरे वाजी सन्परीणीयते देवो देवेषु यज्ञयाः ॐ स्कन्दाय नमः स्वाहा ऋषभम्मा समानानां सपत्नानां विषासहिं हन्तारं शत्रूणां गृधिविराजङ्गोपादिङ्गभाम् ॐ नन्दिने नमः स्वाहा ॐ
स्तु हि श्रुतं गर्तशतं युवानं मृगन्न भीमं वहत्तमुग्रम् राजरिद्रे रुद्रस्तवानान्यन्ते अस्मन्निपवन्तु सेना त्रीणि त्रीणि वै देवानामृद्धानि त्रीणि छन्दागुंसे त्रीणि सवनानि लोकाः रथ्यामेव तद्वीर्य येषु लोकेषु प्रतिष्ठति ॐ त्रिशूलाय नमः स्वाहा ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः महाकालाय नमः स्वाहा दक्षादीम् ॐ सप्तगणेभ्यः ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनो ये अन्तरिक्षे ये दिवेभ्यः सर्पेभ्यो नमः दक्षादिसप्तगणेभ्यो नमः स्वाहा जातवेदसे सुनवामसोमपरादेशतोऽनुदः दिवेदः तनःपर्षति दुर्गान् विश्वानावेव सिन्धुं दुरिताद्यग्निः त्वं दुर्गायै नमः स्वाहा ॐ विष्णोर्राटमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णो नप्त्रेस्थो विष्णोस्योरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णु ॐ विष्णवे नमः स्वाहा ॐ स्वधायै नमः स्वाहा ॐ अपैति मृत्युनमृतन्नागन् वैवस्वतो न अभयं कृणोतु पर्णं वनस्पतेरिवाभिनश्येयतागं मृगस्सजतान्नश्च जीवतिः ॐ मृत्युलोकाय नमः स्वाहा सोमानं सुरानं गृणहि ब्रह्मणस्पते कक्षेमन्तं यौषिजः ॐ गणपतये नमः स्वाहा अप्सु मे सोम ब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषज अग्निं च विश्वशम्भुमापश्च विश्वभेषजीः येषानावार्याण क्षयन्ति सर्षणीनाम् अपोयाजामि भेषजाम् आपवोषधयः सन्तु दुर्मित्रास्तस्मै भूयासुर्स्मान् वेष्टयं च वयं विश्वः ओमाभ्यो नमः स्वाहा मरुद्गणेभ्यो नमः स्वाहा ॐ स्योनार्थविभवानक्षरा निवेशनी पृथिवी नमः स्वाहा इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वती शुद्धस्तोमगुंसुतापरिष्णिका असिग्निजामरत्वदेवतस्तयार्जिकीये शृणुक्यासु सोमया सप्तसागरदेवताभ्यो नमः स्वाहा ॐ गङ्गाय नमः स्वाहा ॐ इमं मे वरुणश्रुधेहमद्याज मृडय स्वामवस्य राजगे स्वा ॐ सप्तसागरदेवताभ्यो नमः स्वाहा ॐ मेरुः मण्डलं परिमस्तमानं गार्ग्यः प्रातः गच्छन्तमहामेरुं पुण्यं चाजहतं प्राजपटरपतङ्गानहने तिष्ठन्नातपन्ति ॐ मेरवे नमः स्वाहा ॐ गौतमाय नमः ॐ इदुवत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय गृणता नमः मयगुं सुमतो यज्ञिकानाञ्जोहजीगतास्याम ॐ सहस्तो मासगछन्दसा वृता सगप्रामानुषाय सप्तदेव्याः पूर्वेषां पन्थामनधृश्य धीरा मन्वारेभिरेत्यो पूर्णरश्मीन सप्तर्षिभ्यो नमः स्वाहा ॐ अंकुशाय नमः स्वाहा ॐ जमदग्नजे नमः ॐ गदाय नमः स्वाहा ॐ शूलाय नमः स्वाहा ॐ वज्राय नमः स्वाहा ॐ शक्तये नमः स्वाहा ॐ दण्डाय नमः स्वाहा ॐ खड्गाय नमः स्वाहा ॐ पाशाय नमः स्वाहा ॐ अंकुशाय नमः स्वाहा ॐ गौदेवाय नमः स्वाहा माहेश्वर्यै नमः स्वाहा ॐ वैनायक्यै नमः स्वाहा ॐ ऐन्द्रियै नमः स्वाहा ॐ कौमार्यै नमः स्वाहा ॐ ब्राह्म्यै नमः स्वाहा ॐ वाराह्यै नमः स्वाहा ॐ चामुण्डायै नमः स्वाहा ॐ वैष्णव्यै नमः स्वाहा मध्ये ॐ ब्रह्मणे नमः स्वाहा सर्वतोभद्रमण्डलदेवस्तेवदेवताभ्यः इदं नमः இப்போ பிரதிஷ்டை அப்படிங்கிறது இறைவன் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறான். வேதம் சொல்றது பிரதிஷ்டாசி பிரதிஷ்டாவந்தோ பூயாஸ்பவா பிரதிஷ்டாயாஸ்சித். இறைவனை நீங்கும் எல்லா இடத்திலையும் பிரதிஷ்டையாயுள்ளாள், என்னை பிரதிஷ்டை செய்வாயாக. பிரதிஷ்டாசி பிரதிஷ்டாவந்தோ, நம்ம பகவானிடத்தில் பிரதிஷ்டை பண்ணு அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறது.
கோஷசாந்தி என்று சொல்லக்கூடிய மந்திரங்கள். நமக்கு ஆரோக்கியத்தை எல்லாருக்கும் தரட்டும். பிரபத்ஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ராமானுஜர் காண்பித்த பிரபத்ஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சரணாகதி. ஓம் பூஃப் பிரபத்யே புவ பிரபத்யே ஸ்வப்பிரபத்யே போத்புவ ஸ்வப்பிரபத்யே வாயும் பிரபத்யே நார்த்தாம் தேவதாம் பிரபத்யே இப்படி சொல்லக்கூடிய எல்லா தேவதாஸ் ஓம் பிரபத்யே அப்படின்னு சொல்கிறது. பரமாத்மா நிர்குணமான இருக்கக்கூடிய அந்த ஓம்கார வடிவம் நான் சரண் புகிறேன். எங்களுடைய துரிதங்களும் பாபங்களும் வரட்டும். வானில் அமைதி, விண்ணில் அமைதி, மண்ணில் அமைதி, என் உள்ளத்துள் அமைதி, எல்லாவற்றிலும் அமைதி ஏற்படும், எல்லாருக்கும் அமைதி ஏற்படும். பிருத்திவி சாந்திர் அந்தரிக்ஷகும் சாந்திர் தியௌ சாந்திர் திசாந்திரவாந்தர திசா சாந்திர் அக்னி சாந்திர் அப்படி சொல்லி எல்லா இடத்துலையும் சாந்தி 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 அப்படி என்று பிரார்த்தனை பண்ணக்கூடிய இந்த நம்முடைய பகவானுடைய வாசஸ்தானம் பிரசாந்தி, உயரிய சாந்தியை. பிரசாந்திங்கிறது உயரிய சாந்தி. அது இந்த சாந்திகளாம் நிரந்தரமானதல்ல, அது நிரந்தரமான சாந்தியானது பகவானுடைய இருப்பிடம். அதனாலே பிரசாந்தி நிலையம் நாம் அவரை இருக்கிறோம். அந்த சாந்தி மந்திரங்களாலே இப்போ ஹோமம். ஓம் ஷன்னோ மாதः பவதாம் மாதரிஷ்வா ஷன்னஸ்தபதூர்யः மஹானிஷம் பவந்து நஷ்யகும் ராத்ரிः பிரதிதீயதாம் விச்சது சபாதித்யமுதேது நः சிவா நஷ்யந்தமா பவ சுமృడీకా சரஸ்வதி மாதே व्योम சந்திருஷி ஸ்வாஹா ஸ்வசிவாஸ்து பத்வாஸ்து பந்தோ பூயாஸ்பமாவாஸ்தோश्चित्पक्ष्यवास्तु सभूयाद्योस्मान् वेट्टियन् स्वाहा प्रतिष्ठावन्दो भूयास्पमा प्रतिष्ठाया श्चित्पक्ष प्रतिष्ठस्य भूयाद्योस्मान् निष्पस्वाहा आवातवाहि भेषजं विवादवाहि यद्रपः देवानां धूयसे वाविमौ वातो वातारिन्धोरावरावरः दक्षं मे अन्यः वादपरान्यो वादयद्रपस्वाहा यतो वादते गृहेर्वतस्य धीरिदः ततो नो देहि जीवसे ततो नो देहि भेषजम् वादावादभेषजं सम्भोर्मयो भोर्नो हृदये प्रणायुगुं हितार्ढ स्वाहा इन्द्रस्य गृहोदितं वा प्रपद्ये सकस्साश्वः स्थितेन स्वाहा भूः प्रपद्ये भवः प्रपद्ये सुवः प्रपद्ये भूर्भवः सुवः प्रपद्ये वायुं प्रपद्येनार्थ देवतां प्रपद्येष्माणमाखणं प्रपद्ये प्रजापतेर्ब्रह्म प्रपद्ये ॐ प्रपद्ये स्वाहा अन्तरिक्षं मूर्वन्तरं बृहदग्नयः पर्वताश्रयावातः स्वस्यास्वस्तिमान्तयः स्वस्यास्वस्तिमानधारि स्वाहा प्राणावाणो नृत्योर्मावादं प्राणावाणो मामाहारिष्टम् अधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुपतिं देवेभ्यो मयि धाम मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु स्वाहा दिभिरक्तभिः परिपातभस्मानरिष्टेभिरश्मिना सौभगेभिः तन्नो मित्रो वरुणो मामहं तामधिः सिन्धुः पृथिवीव दद्यौ स्वाहा ज्ञानचित्रा भवतोति सदा वृद्धसखा स्वाहा तस्मा सत्योपदानामकं हिष्टो वत्सधन्धसः विदाविचारुदेवसो अभीषणस्सकीनामविदाय रिद्रीणां शतं भवास्योनिभिः स्वाहा पयस्सु वर्णा उपसेतुरिन्द्रं प्रियमेधार्षगो नाथमानाः अपद्वान्तमोर्मिहिपोर्तिचक्षुर्मध्यस्मान् धगेव वर्धान् स्वाहा शन्नो देवीर्भिष्टक आपो भवन्तु पीतगे संयोर्भिष्टवन्तु न स्वाहा पार्याणां शयन्तीश्चर्षणीनाम् अपोयाजां भेषणं सुमित्राणापावड्यस्मै भूयाद्रियोस्मान् वेष्ट्यन्तवयन्तु स्वाहा मयो भवस्तानवोर्जेधादना महेरणाय चक्षुषे योऽश्वतमोर्तस्य भारिकटेहनः कुसुतीरिव मातरः तस्सा अरङ्गमावो यशिक्षकागिलिन्वथा आपो जनगथा जन स्वाहा पृथिवी शान्ता अग्निना शान्ता सामे शान्ताष्टुकुं शमयतु अन्तरिक्षकुं शान्तं तद्वायुना शान्तं तन्मे शान्तं शुचकुं शमयतु यौ शान्ता सादित्येन शान्ता सामे शान्ता शुचकुं शमयतु स्वाहा पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षकुं शान्तिर्दौ शान्तिर्दुषः शान्तिरवा आदित्य शांति चंद्रमा शांति नक्षत्राणि शांति वनस्पति शांति गौ शांति शांति विश्व शांति पुरुष शांति ब्रह्म शांति ब्राह्मण शांति 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 स्वाहा तगाकुं शांत्या सर्व शांत्या मह्यन्द्रिपदे चतुष्पदे शांति गणोमि शांति अस्तु शांति स्वाहा यः श्रीश्च ह्रीश्च तपो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चेदानि मोत्तिष्ठन्तमनो मामाग श्रीश्च
ह्रीष्टो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चैतानि मामाः शिषु स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोषधीनागमृधेना पर्जन्यस्पेणोदस्तामृतागमनो तच्चक्षुर्देवहिदम्बरस्था शुक्रमुच्चरते स्वाहा पश्येमि शरदश्रुतं जीवेमि शरदश्रुतं नन्दामि शरदश्रुतं मोदामि शरदश्रुतं भवामि शरदश्रुतं प्रब्रवामि शरदश्रुतमतीतास्यामि शरदश्रुतं ज्योतिसूर्यन्धे स्वाहा यमुदगान् महतोर्णवान् विभ्राजमानशिरस्य मध्यात्माविषभोदोहिताक्षसूर्यो विपश्चिन्मनधापनातु स्वाहा ब्रह्मणश्चौदन्यस्य ब्रह्मण आने स्व ब्रह्मण आवणमसि भारतयं पृथिवी ब्रह्मणा महीधारतमेनेन महदन्तरिक्षम् पृथिवीकं सदेवाङ्गिदहं वेददहन्धारकानि मामद्वेदोदि विसृषत स्वाहा मेधामि निषेमाभिषदागं समीचे भूतस्य भव्यस्यावरुद्यैः सर्वमायुर्गानि स्वाहा आभिर्भिर्भिर्भिर्गो नवो नमाप्याय हरिभो वर्धमानः यदा स्तोत्रभ्यो महिगोत्रारिजासि भूयिष्ठभाजोऽधरे स्याम ब्रह्म प्रवादिष्पदन्नो महासीत् ॐ शान्ति शान्ति स्वाहा शान्तिकरदेवताभ्यः इदं नमः आयुर्देवतः शन्नो वित्वर्यमा वरुणः शन्नो भवत्वर्यमां शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 स्वाहा शन्नो मित्रस्य वरुणः शन्नो भवत्वर्यमां शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिनं प्रथमादिनं सत्यमवादिनं तन्मावेद तत्वक्तारमावेद आवेर्वक्तारम् ॐ शान्ति 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 स्वाहा नमो वाचे गाजोदिता गाजानुदिता तस्यै वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमः ऋषिभ्यो मन्त्रकृभ्यो मामामृषियो मन्त्रकृतो मन्त्रपतयः पराधर्मामिषे मन्त्रकृतो मन्त्रपदें पराधामैश्वरेवें वाचपद्याजकं प्रदस्ताञ्जुष्ठान् देवेभ्यः शर्ममेद्यो शर्म पृथिवी शर्म विश्वमिदं जगत् शर्म चन्द्रश्च सूर्यश्च शर्म ब्रह्म प्रजापति भूतं वदिष्ये भुवनं वदिष्ये तेजो वदिष्ये विशो वदिष्ये नमो वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वदिष्ये तस्मादहमिदमुपस्तरणं मे प्रजायै पशूनाम् प्रजायै पशूनां भोजा सम्राणापानो मृत्योर्मापातं राणापानो मामाहादिष्टं मनुष्ये मधुनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुमदिष्यामि मधुमदेन देवेभ्यो वाचमुद्याजकं भागे पितरोऽनुमदन्तु ॐ शान्ति 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 स्वाहा घातं यज्ञाय घातं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओ अर्धन्ति गातुवेषणं षण्णोस्तत्विपदे चन्द्रस्पदे ॐ शान्ति 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 स्वाहा यच्छन्दतो सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 स्वाहा यच्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो निमृतात् सम्भवो समेन्द्रो मेधया स्मृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयातं शरीरं मे दर्शनं जिह्वा मे मधुमत्तमा करुणाभ्यां भूरिविश्वं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय स्वाहा ஆவஹந்தி என்று சொல்லக்கூடிய மந்திரங்கள் வரட்டும் பெருகட்டும். இது குர்வாணா சீரமாத்மனஹா என்னுடையத்திலே பர்மனெண்ட்டாக நிலைக்கட்டும். பாசாகும் சிபமகாவஷ இருக்கிறதுக்கு எல்லாருக்கும் இடம் வேண்டும். எல்லா பசுக்கள் இருக்கக்கூடிய இடம் வேண்டும். அன்னபானேச்ச சர்வதா எல்லாருக்கும் அன்னமும் பானமும். இது ஆவஹந்தி ஹோமம்னு விசேஷமாக எல்லாருக்கும் எல்லா வளங்களும் கிடைக்கட்டும் பிரார்த்தனை. ததோ மே ஸ்ரீயபாவஹ அப்புறம் மகாலட்சுமி வரட்டும் பிரார்த்தனை. ஓம் ஓம் ஆவஹந்தி விதன்வானா सर्वाणादीरमात्मनः वासागं सिममगावश्च अन्नपानेच सर्वदा तथो मे श्रियमावः लोमशां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा
दमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा क्षमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा यशोजने सानि स्वाहा श्रेयान्वस्य सौधानि स्वाहा तन्वाभगप्रविशानि स्वाहा समाभगप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे विभगाहन्वयमृते स्वाहा यथा वः प्रवतायन्ति तथा मासाहार्जनम् एवं मां ब्रह्मचारिणः धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमाभाहि प्रमापद्य स्वाहा धात्रैदन्नममाम् सन्दधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तत्वक्तारमवत्मवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ओम नमो ब्रह्मणे नमो भूरग्नजय च पृथिव्यै च महते च स्वाहा भुवो वायवे चान्तरिक्षाय महते च स्वाहा सुवरादित्याय दिवे च महते च स्वाहा आदित्याय दिवे महते च नमः भूर्भुवस्सुवस्सन्नमहे नक्षत्रेभ्यः दिग्भ्यः महते च स्वाहा चन्द्रमहे नक्षत्रेभ्यः दिग्भ्यः महते च नमः. Now Purnahuti will be there. So Purnahuti is offering ourselves to Bhagavan. So whatever we have done past, itaf purvam prana buddhi deha dharmadikaratah, everything we are offering it to you. Then brahmarpanam brahmahavi. Daily we are doing yajna, that is our inside Paramatma is residing. That's why we are doing daily yajna. Adupole in the idre kude the Purnahuti mantra kude brahmarpanam brahmahavidan in that today. So ellarum let us together we will chant this. ओम इतः पूर्वं प्राण बुद्धि देह धर्म अधिकारतः जाग्रते स्वप्न सुषुप्ति अवस्थासु मनसा वाचा कर्मणा यत्कृतं यदुक्तं यत्स्मृतं तत्सर्वं ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना आराधित सर्वदेव आत्मा स्वरूपिणे युग अवतार पुरुषाय अस्माकं अतिप्रिय श्री स्वामिने नमो नमः गंधपुष्प फलतांबूल सहितं आत्मसमर्पण रूपेण महापूर्णाहुतिं समर्पयामि मुहूर्तवाद्यं मणि नाहुतिमुत्तमां ज्योते सर्वमयपूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथोऽयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठते स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वाः सप्तर्षयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गजन्ति सप्तयोनीरावृणस्वाघृतेन स्वाहा अग्नये सप्तवत इदं नमः.
वामायै नमः ॐ ओम श्रेष्ठायै नमः ओम रौद्रे नमः ओम काल्यै नमः विकरण्यै नमः ओम बलविकरण्यै नमः बलप्रवसन्यै नमः मध्ये मनोन्मन्यै नमः आयङ्गौ प्रश्नक्रमेरसनन्मातरं पुनः पितरं च प्रयान् सुवः दामविराजदिवाक्पतङ्गाय श्रये प्रत्यस्य वहद्युधिः अस्य प्राणादपानत्यन्तश्चरितिरोचन ख्यन्महिषस्वः तत्त्वात्परोपमन्युनायवर्त्या सुकल्पमग्ने तत्त्वपुनस्तोद्दीपयामसे यत्ते मन्यपरोक्तस्य पृथिवे मनतद्वसे आदित्या विश्वेरद्देवावसवच्च समाभरन् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं ॐ नमो भगवते शिवतत्त्वात्मिकाय जपाकुसुमशङ्काय मानित्यात्मने सूर्याय दर्शकलात्मने नमः मानित्यस्थापने ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं ॐ नमो भगवते शक्तितत्त्वात्मिकाय तुषाराभाय मौक्तिकात्मने सोमाय अमृतकलात्मने नमः मौक्तिकं स्थापयामि नमः ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं ॐ नमो भगवते मायातत्त्वात्मिकाय विद्युत्कान्तसमप्रभाय विध्रुमात्मने भौमाय वेदकलात्मने नमः विद्रुमं समापयामि ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं ॐ नमो भगवते शुद्धविद्यातत्त्वात्मिकाय प्रियङ्कुलिकाभासाय मरकदात्मने बुधाय विद्यातत्त्वात्मने नमः मरकतं स्थापयामि नमः ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं ॐ नमो भगवते जलतत्त्वात्मिकाय गुरुकाञ्चनसन्निभाय पुष्परागात्मने बृहस्पतये वेदगुरवे सुदर्शनप्रतिष्ठाकलात्मने नमः पुष्परागं स्थापयामि नमः ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं ॐ नमो भगवते तेजस्तत्त्वात्मिकाय हेमकुन्द मृणालाभाय वज्रात्मने दैत्यगुरवे मायातीतकलात्मने नमः वज्रं स्थापयामि नमः ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं ॐ नमो भगवते वायुतत्त्वात्मिकाय नीलाञ्जनसमाभासाय नीलात्मने सूर्यपुत्राय शनैश्चराय शान्तिकलात्मने नमः इन्द्रनीलं स्थापयामि नमः ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं ॐ नमो भगवते पृथ्वीतत्त्वात्मिकाय सिंहिका गर्भसम्भूताय गोमेदात्मने राहवे सूनृत प्रतिष्ठाकलात्मने नमः गोमेदकं स्थापयामि नमः ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं ॐ नमो भगवते आकाशतत्त्वात्मिकाय पलाशधूमसङ्काशाय वैढूर्यात्मने शान्त्यातीत इन्धिकाकलात्मने नमः वैढूर्यं स्थापयामि नमः ॐ ह्रीं ऐं क्लीं तातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनादिभवे भवस्वमा भवोद्भवाय नमः वाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः बलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनाय नमः घोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो बाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः त्यम्बरं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॐ अग्नेरन्वे प्रथमस्य प्रदेशोऽयं पाञ्चजन्यं भगवत्समिन्धते विश्वस्यामिषि प्रविशिवागं समीमहे सुनो मुञ्चन्त्वगं हसः पाञ्चजन्याय विद्महे पापमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् असुरो महादिवस्त्वगं श्रद्धो मारुतं वृक्ष ईशुषे त्वं वादैररुणैर्याशङ्कयस्त्वं पूषा विदधः पासिनुत्पणा आशुशिषो न वृषभो न युद्मो घनः क्षोभनश्चर्षणीनां सङ्ग्रन्दनो निमिष एकवीरः शतगुंसेन अजगत्साकमिन्द्रः
संग्रन्दनेन निमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुश्चवनेन दृष्णुना तदिन्द्रेण जगत तत्सखत्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा सगिषुहस्तैः सनिषङ्गिभिर्वसीः सग्यसृष्टा सगिदगिन्द्रो गणेन सकुं सृष्टजित्सोपपाबाहुषद्योद्बधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता बृहस्पते परिधीगारथेन रक्षोः मित्रागुम् अपबाधमानः प्रभञ्जन् सेना प्रणयुधादिगन्नस्माकमेध्यपितार्थानां गोद्रविधं गोविदं वज्रबाहुं जगन्तमजुमप्रभृणन्तमोजसा इमगुं सजाता अनुवीरयध्वमिन्द्रगुं सखायो नसुगुं प्रबद्धं फलविज्ञायस्तविरः प्रवीरः सहस्वानवाजी सहमानमुग्रः अभिवीरो अभिषत्वासो जाजैत्रमिन्द्ररथमातिष्ठ गोपित अभिगोत्राणि सहसागाहमानोदायो वीरः शतमन्युरिन्द्रः दुष्टवनप्रतनाहाडयुध्योऽस्माकगुं सेना अवतु प्रयुत्सो इन्द्र आसान्नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुरयेतु सोमः देवसेनानामभिभञ्जतेनाञ्जयन्तेनामृतो यज्वग्रे इन्द्रस्य विष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुदागुं शर्धमुग्रं महामनसां भुवनच्यमानां घोषो देवानां जगतामधस्थात् अस्माकमिन्द्रस्समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तस्मान् देवा अवताहवेषु उद्धर्षभवन्नायुधान् युत्सत्वनां मामकानां महागुंसे उत्वृद्रहन् वाजिनां वाजिनां यद्रथानां जगतामेतु घोषः उपप्रेत जगता नरस्थिरावः सन्तु बाहवः इन्द्रो वः सर्व यच्छद्वनाधृष्या यथा सता अवसृष्टा परापतशरव्ये ब्रह्मसगुंसिता गच्छामित्रान् प्रविशमैषान् कञ्चनोत्तिषः मर्माणि ते ब्रह्मभिश्चादगामि सोमस्त्वा राजामृतेनाभिवस्ता पुरोर्वरीयो वरिवस्ते अस्तु जगन्नन्वामनमदन्तु देवाः यत्र बाणाः सम्पदन्ति कुमाराभिषिखाय वा इन्द्रो नस्तत्र वृतः विश्वाः शर्म यच्छतु प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगुं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पोषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातःसोममुतरुद्रगुं हवेम प्रातर्जितं भगमुग्रगुं हवेम वयं पुत्रमधिदेर्यो विधत्ता आर्द्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजादित्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणेभिर्भगसत्यराधो भगवान्धयमुदवदनन्नः भगप्रणोजनयुगोभिरश्वेर्भगप्रणभिर्नृवन्तस्याम उदेदानीं भगवन्तस्यामोदप्रवित्यमुतमध्ये अह्ना उदोतिना भगवन् सूर्यस्य मघं देवानागं भवतो स्याम भग एव भगवागुमस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तस्याम तन्त्वा भगसर्वयुज्योऽस्तीमिषनो भगपुररेता भवेह समद्वरायोषधो नमन्तदधिक्रावे वशुतये पदाय निर्वाजीनं वसुमिदं वसन्नोरथमिवाश्वावाजिना वहन्तु अश्वावतेर्गोमतेर्नपुषा वीरमतेः सतमुच्यन्तु भद्राः तदन्तुहाना विश्वतः प्रवीणा योऽयं पात स्वस्तिभिः सदा नः यो माग्ने भागिनगुं सन्तमथा भागिं जिगीर्षति अभागमग्ने तङ्कुरु मामग्ने भागिनं कुरु शरणं पवित्रं विततं पुराणं येन भूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूताः अधिपाप्मानमरादिन्द्रेम लोकस्य द्वारमर्चिमत्पवित्रम् ज्योतिष्मद्भ्राजमानं महस्वते अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानं चरणन्नो लोकेषु धितां दधातु प्रातर्मित्रवरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पोषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रगुं हवेम ध्रुवन्ते राजा वरुणा ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् पर्वत इवाभिजायलिः इन्द्र इवेहध्वस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुधारय अभितिष्ठप्रदं यतः अधरे सन्तु शत्रवः इन्द्रियवृतः तिष्ठावें वाचमदरजन्त देवाः तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानो मन्त्रकिशमोर्जन्तुहाना धेनुर्मः यद्वाग्वदन्त्य विचेतनानि राष्ट्रे देवानां निषसादमन्त्रा ततस्तोर्जन्तुदहपगागुंसे कस्तिरस्य परमं जगाम अनन्तावन्तानुधनिर्मितां महीं यस्यां देवादुर्भोजनानि
एकाक्षरान्ति पदागं षट्पदाञ्च वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे वाचं गन्धर्वाः पशवो मनुष्याः वाचीमा विश्वा भवनान्यर्पिता तानो हवञ्जुषदामिन्द्रपत्नी वागक्षरं प्रथमजातस्य वेदानां मातामृतस्य नाभिः सानो जुषाणोपयज्ञमागात् अवन्ते देवी सुभवे अस्तु अन्वैच्छन् देवास्तपसाश्रमेण तान् देवीं वाचकुं हविषा जजामहे सा नो दधातु सुकृतस्य लोके तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहात्रीनि निहितानेऽङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति शान्तिः शान्तिः சாய்ராம். ஸோ ரத்ன நியாசம் என்று சொல்லக்கூடிய ரத்னங்கள் எல்லாம் பொதிக்கப்பெற்று மற்றும் தங்கம் வெள்ளி பாதரசாதிகள்லாம் பகவானுக்கு சமர்ப்பணமாகி நம்ம இதய கமலம்தான் அங்கே அழகாக வீற்றிருக்கிறார்கள். மற்றபடி மற்ற காரியக்கிரமங்கள் இப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. ஸோ இப்போ நம்ம ஆவலாக எதிர்பார்த்த நம்ம திருவாளர் அவர்கள் ரத்னாகர் அவருடைய ஸ்பீச். ஸோ எல்லாரும் பொறுமையாக இருந்து கேட்க முடியாது பிரார்த்திக்கிறோம். சாய்ராம். ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம். நம் எல்லோரும் சார்பாக நம்முடைய இதய தெய்வமான பகவானின் பொற்பாதங்களில் நம்முடைய அன்பான பணிவான மரியாதைக்குரிய நமஸ்காரங்கள். Now it is my privilege to invite all the dignitaries on the stage. I invite Shri R.J. Ratnakar, Managing Trustee of Shri Sathya Sai Central Trust. I invite Dr. V. Mohan, Trustee, Shri Sathya Sai Central Trust. That's it. I invite Professor E. Mukundan, Zonal President, South Zone, Shri Sathya Sai Seva Organizations. We also invite Shri Ramesh, Convener, Shri Sathya Sai Trust, Tamil Nadu.
It is also our privilege to invite Sri Chandrasekhar, State President for Tamil Nadu North, Sri Sathya Sai Seva Organization. இந்த அற்புதமான மாலை பொழுதில் ஒரு இதயம் கனியக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சி கொடைக்கானல்ல நடந்தது. அதை இந்த ஒரு மாலை வேளையில நம்ம நினைச்சு பார்க்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். ஏன்னா இந்த நிகழ்வுக்கும் அதுக்கும் ரொம்ப நெருங்கிய ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு. ஒரு தடவை சுவாமி கொடைக்கானல்ல பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது சொல்லிட்டு இருந்தார், இந்த அவதாரம் நம்ம இடையே வந்திருக்கிறது மட்டும் முக்கியம் கிடையாது, ஆனா அந்த அவதாரம் அவருடைய பெருமையை நமக்கு சொல்ல வேண்டிய நிலையில நம்ம இருக்கோம். அந்த பாக்கியமும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அப்படி ஒரு தடவை சுவாமி கொடைக்கானல்ல பேசிட்டு இருக்கும்போது சொல்றாரு, ஒரு சின்ன கதை சுவாமி சொன்னார். ஒரு தடவை பரமசிவனுக்கு ஒரு பெரிய குழப்பம் வந்ததாம். ஒரு முறை பரமசிவனுக்கு ஒரு பெரிய குழப்பம் வந்ததாம். அந்த குழப்பம் ரொம்ப யோசிச்சு பார்த்ததுக்கு அப்புறமும் தீரவே இல்லை. சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் மகாவிஷ்ணு கிட்ட போனாராம். இந்த கதை சுவாமி சொல்றாரு கொடைக்கானல்ல. மகாவிஷ்ணு கிட்ட போயிட்டு அந்த சந்தேகத்தை கேட்டதுக்கு அப்புறமும் அவரும் சிந்திச்சு பார்க்கறாரு, அவருக்கும் விடை தெரியல. சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாம் பிரம்மா கிட்ட போறாங்களாம். பிரம்மா கிட்டையும் அந்த சந்தேகத்தை கேட்குறாங்க. அவரும் சிந்திச்சு பார்க்கறாரு, அவருக்கும் விடை தெரியலையா. சரி, அவங்க 3 பேரும் என்ன முடிவு பண்றாங்க அப்படின்னா, சரி இதெல்லாம் நமக்கெல்லாம் ஆதி தெய்வமா இருக்கக்கூடிய லலிதா பரமேஸ்வரிட்ட போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லலிதா தேவி கிட்ட போறாங்களா. அவங்க கிட்டையும் போயிட்டு இந்த சந்தேகத்தை சொன்னோன்னா அவங்களும் சிந்திச்சு பார்க்குறாங்க, அவங்களுக்கும் விடை தெரியலையா. சரி, நமக்கெல்லாம் ஆதியா இருக்கக்கூடிய பரம்பொருள்கிட்ட போவோம்னு சொல்லிட்டு அவங்க 4 பேரும் கிளம்புறாங்க. இந்த கதையை சுவாமி கொடைக்கானல்ல சொல்றார். அந்த 4 பேரும் கிளம்பி போனோன்னு பெரிய ஒரு கதவு இருக்கு. அந்த கதவை திறந்ததுக்கு அப்புறம் உள்ளார பார்த்தா இந்த 4 பேர் மாதிரி 1000 4 பேர் அங்க நின்றுட்டு இருக்காங்களாம். ஒரு கடைசியில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பாதம் மட்டும்தான் தெரியுதான். அந்த முழு பரம்பொருள் கூட தெரியல. அவ்வளோ கூட்டம், அந்த 4 பேர் அவ்வளோ 1000 4 பேர் நிற்கிறாங்களாம். அந்த கடைசியில் ஒரு குட்டி பாதம் தெரியுதா. அந்த பாதம் யாரோடதா தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாமி தன்னுடைய பாதத்தை காட்டினார். அப்படிப்பட்ட ஒரு மகிமைமிக்க பாதத்தை இன்று நம்ம பிரதிஷ்டை பண்றக்கூடிய நிகழ்வு நம்ம எல்லாம் இருக்கிறோம். எல்லாத்துக்குமே பரம்பொருளா இருக்கக்கூடிய அந்த எந்த வடிவத்திலுமே அடங்காத அந்த பரம்பொருளை இன்னைக்கு ஒரு குட்டி வடிவத்தில் அவரோட பாத வடிவத்தில் நம்ம எல்லாம் இங்கே பிரதிஷ்டை பண்ண போறோம். நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்தில் அடிகளார்னு கூப்பிடுறோம், இல்லை பகவத் பாதான்னு கூப்பிடுறோம். ஏன் அப்படின்னா நம்ம எல்லாமே அந்த பாதத்தோட மட்டும்தான் சம்மந்தப்பட்டுக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட பாதத்தை இன்னைக்கு இங்க பிரதிஷ்டை பண்றது ஒரு குறியீடு மட்டுமே. ஏன்னா உண்மையான பிரதிஷ்டை நம்மளுடைய இதய கமங்களில் நடக்கணும். அதுக்கு ஒரு முத்தாய்ப்பான நிகழ்ச்சியா இன்று நம்மளுடைய மாலை நிகழ்ச்சி இருக்க போகுது. முதலாவதாக, once again it is our privilege to request Shri B. Ramesh, convener Shri Sathya Sai Trust Tamil Nadu, to welcome the gathering. Om Shri Sai Ram. My dear Swami, Shri R.J. Ratnakar, Managing Trustee, Shri Sathya Sai Central Trust, Dr. Mohan, Trustee, Sathya Sai Central Trust, Professor Mukundan, Zonal President, Shri S.R. Chandrasekharan, the State President, the co-trustees of the Shri Sathya Sai Trust Tamil Nadu. We have Shri Ramani and all the other co-trustees, Mr. Adimulam, Mr. Bhupal. And we have Dr. Sai Kumar with us, IAS. I welcome you all with folded hands, not to miss out our own organization members, the office bearers of Shri Sathya Sai organization, the workers. Not the least important are the workers. When I mean workers, I mean workers of the 3 wings of the organization, the spiritual, education, service wing. I welcome you all.
when I say start saying names, there are also here families who have been for last several decades, they've been very, very, very close to Swami, and they're all humility personified, and they don't want to be known. So I won't even be able to call the names and welcome them. They don't want to be known. So we have such people also here. But I welcome you all with folded hands. You see, this place, this has been, if you see the records, it is registered as Swami's residence. See, we all say that Swami owned the universe, he created the universe, he protects the universe and all that. But during his physical sojourn on earth, he said, this is my residence. And also he gave it, you use it, he gave it off. So, which means he is the host and we're all guests. I don't know, I have the right to welcome you all because he is welcoming all of us with open arms into the portals of Sundaram. And we all had experiences. I've set my clock for 5 minutes, make sure that I'll finish off. I know we have other programs. One look, Swami looks at you, or he smiles at you, or an abhayhastam, or he say, from Tamil Nadu people come, Eppo vandache. So that one word, a look, a smile, it just transforms us, isn't it? And if you see here, there are strangers, when we can't call anybody as a stranger because nobody is a stranger to Swami. But in our parlance, we have to call some strangers. They walk in as strangers and when they leave the portals, they become devotees. And if you see here, about 4 decades back, there's a boy who used to make fun of Swami, who used to ridicule Swami. The same person is standing in front of you and talking about being a trust convener. That's the power of the universal mother's love for us. But one thing I'm very, very clear that we have is assurance. I don't do any work. He does all the work and gives us the credit. And he has given an assurance that you be available. Rest I will take care. So I'm witnessing all that for the last 2 years. I know what's happening. I can write a book or 2 books, but I don't want to waste my time and others' time because we have enough books on Swami. Before I conclude, I'd like to express my gratitude to Bhagwan and also our sincere thanks to Sri Ratnakar for having blessed us with this Paduka. This Paduka is a reminder of what our responsibilities are. I just have to say, there's a group of devotees who went from Andhra to Puttaparthi by walk, Pāda Yatra. So normally when you go by Pāda Yatra, Swami, they all come by for Pāda Yatra from Andhra. That time Swami said in Telugu, Neenu cheppina baatalu nadavamani cheppinanu, Kani akkada nunchi nadichi rammani cheppaledu. I am not good in Telugu, but what Swami said was, I never asked you to come from there to here. I asked you to follow the path that I have laid for you. And the teachings of Simple are very simple. What Swami said, love all, so all. Isn't it? Nothing else. So with these few words, I welcome you all for this function. And when you go home, the physical Paduka will be here, but make sure that you take the Paduka within our hearts and follow the path laid by Swami. Sai Ram. Thank you so much. Sai Ram. Thanks, sir, for the warm welcome. The Paduka Prathishta function is actually a reminder because human mind tends to forget. Remember, at every inch of this place, the length and breadth of this place, Swami has already made his Paduka Prathishta because he has already walked the length and breadth of this place. So at every spot, even wherever you are sitting, wherever you have placed your foot,
Swami has placed his golden lotus feet in that place. So it's already the Prathishta is done. It's for us to remember that we are making a symbolic Paduka Prathishta today. The next will be our eminent guest, Dr. V. Mohan sir, trustee Sri Sathya Sai Central Trust. He will address the gathering. We invite Dr. V. Mohan. Om Sri Sai Ram. I offer my most humble, loving and reverential pranams at the divine lotus feet of our Lord and Master, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, but for whom none of us need to be here. It is in His name, it is because of Him, because of His love for us that we are all here. Respected Sri Ratnakar, Managing Trustee, the Sri Sathya Sai Trust, Brother Mugundan, who now represents all the southern states in his new role, State President, SRC, Sir Chandrasekharan, my younger brother Ramesh, who took over from me as a convener of the trust, all the trustees of the Sri Sathya Sai Central Trust, the district presidents, and all the other committee members, Mahila coordinators, spiritual coordinators, Sai Kumar and other eminent devotees, doctors, and all my Sai brothers and sisters, my loving Sai Ram to all of you. 2 years passed with hardly any public function of this type, and therefore it is only through Swami's grace that we are all able to assemble in such large numbers in this beautiful satsang here to have the Prathishta of our Divine Lord's Paduka. This is a gift from Prasanthi Nilayam, and one more connection between Prasanthi Nilayam and Sundaram. All of you know how fond Swami was of not Chennai but Madras. He used to always say Madras till the end. And he himself used to drive the car and come in his younger days. And it is said, I don't know, that he's probably visited Chennai more number of times than Hyderabad. Of course, you're not competing with Hyderabad, but I'm just saying the love and affection that Swami has for Chennai. And Sundaram is really his home. And Sundaram is a place where he manifests himself again and again. We in Chennai are so much blessed to see his manifestations, to see him announce himself, and to remind us that Sathya Sai Baba lives on. Only his physical form may have left, but he is always there, not only in our hearts, but if you truly believe, you can see him in so many forms. But for that, faith is needed. Swami has given us so much. And the one gift which he has given us, which we can never repay, is his love, his limitless love. My speech at the Aradhana Mahotsav at Puttaparthi, I mentioned this, that if there is one attribute of Swami which we can all be grateful for and we'll always remember, it is his love. A type of love which cannot be reproduced. Even if all of us join together and share some of the love, it is limitless. His love is that of a billion mothers. They say a mother's love is great. His is like several billion mothers' love. So we cannot even imagine. It's like the sun. Can you ever imagine what the sun is like? So it is like that. Now, reminders such as this, that when a Prathishta of the Paduka is being done, is only an opportunity for us to reconnect to that source. To reconnect not only to the Paduka here and to Sundaram and to Swami, but to reconnect to Prasanthi Nilayam. Because that is the real home of Swami. That is where he was born. That is where he lived. That is where he gave his discourses. That is where he formed organizations for all of us to take part. And that is where he now rests. And therefore there is no other home other than Prasanthi Nilayam. Some of us may not have had the opportunity to reconnect to Prasanthi Nilayam. I think that's a mistake, because
when we go to Prasanthi Nilayam, we recharge our batteries. In January, we had a beautiful IAS officers meeting, and it was so nice to have the same meeting if it was held somewhere else. It will not have that divine aspect to it. So this is one more opportunity of a Paduka Padam coming from Prasanthi Nilayam, now being installed with all the Vedic rites. It was so nice sitting here and listening to the Ritviks led by Srinivasan, so beautifully explaining what it's all about. And of course, to get the managing trustee, Mr. Ratnakar, and his wife, Mrs. Ratnakar, to come in the peak summer, not only to visit Sundaram for this particular function, but to attend other functions and then to visit several places in Tamil Nadu, I think deserves a big round of applause, because if you know the amount of work which a managing trustee does in Prasanthi Nilayam, I get scared, because every minute he has to keep doing something. And despite all that, he has allotted time to be with us, to talk to us. He has had so much of personal experiences with Bhagavan, which probably none of us have been blessed to have. And so we are all looking forward to his words of wisdom. Before I end, I just want to tell you that these are changing times. There may be 7 billion people in the world, but we are all hand-picked devotees, hand-picked by Swami. And if he has not hand-picked us, we are the chosen few. If he has not chosen us, we will not be here today. We are the chosen few who have been able to see the avatar in flesh and blood, to hear him, to get his Pāda Namaskar, to be guided by him, and to continue to be inspired by him. 30 years from now or 40 years from now, a generation of people who would never have seen Swami. It's like, oh, you have seen Shirdi Baba? Have any of us here seen Shirdi Baba? Not in flesh and blood. We might have had experiences, but we have not seen him in flesh and blood. 30, 40 years from now, in Sundaram, when meetings are held, not a single person probably would have seen. It's not 30, 40 years, take it 100 years. 100 years from now, nobody sitting here in Sundaram would have even had one glimpse of Swami. So imagine how fortunate we all are. So what do we do in return to Swami? We can't do anything in return to him. His love is limitless. He has done too much for us. But can we at least be those Sai ambassadors which Swami wants us to do? He brought us into the fold. He hand-chose us, hand-picked us, only to make us Sai ambassadors to continue the divine work. That divine work he could have done without us. But he gave us an opportunity to be part of his divine mission. I find, and I just want to say that, I find that there are changes in the organization. Today, people are about exerting authority. I am the president, you are somebody else. My samiti is bigger than your samiti. Why is a lot of comparisons being done, which is not necessary? Because I think even as a committee with 4 people, samiti with 4 people, that is as important to Swami as a samiti with 1,000 people. It makes no difference to Swami. In our eyes, it may look like that. But in Swami's eyes, if those 4 people are praying hard to Swami, they're equally important. So let's not compare. Because I've had a patient an elderly couple, very much involved in the organization, who came and cried to me recently. Why has it become like this, sir? They are blaming us and saying the neighboring samiti is bigger than ours. Why when Swami never asked us which is bigger, which is smaller? Why you are asking now? We are all above 70, and this time you have to tell us our samiti is not good and that is not good. If you have done something wrong, you can tell us. So let us treat every Sai devotee with love. It is only with love that we can hold the organization together. And that's the only thing Swami expects from us. And the second thing is that today we all live busy lives. I know we say bring youngsters into the organization. And we must, of course, bring leaders into the organization. For example, Brother Ramesh has now taken over from me, and he's a much better convener than I ever was. He's able to give so much more time to the organization. We must all see that the next person who comes in is far better than us. Only then the organization will go on. And even for that, we have to have love. We have to love each other. So on the Prathishta day, what other word than love? If we can spread that love among all the Sai devotees, I'm sure this organization, which has risen to become the world's largest spiritual organization, perhaps
one of the most unique spiritual organizations in the world, will continue to shine forever and forever. And that is the greatest tribute that we can pay to our Lord. Jai Sai Ram. Thanks, sir, for the wonderful address, focusing on the importance of how to remember that we are the chosen one. It's very important to remember that we are the chosen one. It is not by our choice. Most of us have been contemporaries of an avatar. In the eons of the whole time frame, thousands and millions of years, Avatar has decided to stay for just 85 years. And we have been contemporaries of that avatar. It is not just a slice of luck or coincidence. It's actually divine will that you have been contemporaries of avatar. Thanks for that wonderful message, sir. Next, we will have Professor E. Mukundan, Zonal President, South Zone, Sri Sathya Sai Seva Organizations. He will address the gathering. Om Shri Sai Ram. Most beloved Swami, revered Ragnagari Sir, Managing Trustee, Sri Sathya Sai Central Trust, revered Dr. Mohan, Member, Sri Sathya Sai Central Trust, my brothers Chandrasekhar, State President, Tamil Nadu North, Brother Ramesh, Convener, Sri Sathya Sai Trust, Tamil Nadu, revered elders, office bearers of Sathya Sai Seva Organization, members of Sri Sathya Sai Trust, Tamil Nadu, and loving brothers and sisters. I seek Bhagavan's permission and blessing to share only one point. How fortunate we are being the devotees of Bhagavan Baba. One day, Swami asked a group of students, what is the rarest of the rarest in this universe? As usual, students gave number of answers. Swami said, the rarest of the rare is to get human birth. Still rare is getting human birth as contemporary to an avatar. Still rare is to understand, to realize that he is the avatar. And the rarest of the rare is to get an opportunity to serve in the divine mission. So we are fortunate, number one. We are fortunate, number two. One day Swami had some guests. Swami was talking to the spiritual matters to them. Then Swami was silent for 1 or 2 seconds and Swami asked, what gift I should give you? Again Swami was silent. After 2 seconds Swami said, which greater gift can I give you than my coming down? That is the second reason why we are fortunate. Third reason why we are fortunate is Bhagavan is giving us the best medium, best means, golden mean to get transformed ourselves. The message of Bhagavan is transform yourself before you transform the world. Number 4, Swami gives us the best opportunity to practice giving and forgiving. Giving and forgiving. Not only Swami tells us, but Swami shows the way. After completing the water project in the Rayalaseema area, all the village heads came to Prasanthi Nilayam. Swami asked them, why you have come? They said, Swami, to express our gratitude to you. Swami said, I did that for my thirst, not for your thirst. Swami shows how we should do his seva. If we practice all these things, we can pray before Bhagavan saying that, Swami, our life is thy message. Sai Ram, thank you. Thank you, sir. Next, we invite the State President of Tamil Nadu North, Sri S.R. Chandrasekharan.
ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம். பகவானின் திவ்ய சரண கமலங்களில் பணிவான நமஸ்காரங்கள். ரெஸ்பெக்டட் மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி ஸ்ரீ சத்ய சாய் சென்ட்ரல் ட்ரஸ்ட் ரத்னாகர் சார், ரெஸ்பெக்டட் டாக்டர் மோகன் trustee Sri Sathya Sai Central Trust, our dear Mukundan sir, the newly taken over zonal president for the southern zone, தென் மண்டல மாநில தலைவராக, தென் மண்டல மாநிலங்களுக்கு தலைவராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள திரு முகுந்தன் அவர்களுக்கு ஸ்பெஷல் வெல்கம் from all of us sir. Dear brother Ramesh, my dear trustees of the trust, and all the other senior elders, my dear brothers and sisters, and Sairam to all of you, and a very warm welcome on this very hot sunny evening. This Sundaram has become in further Sundaramaga, already ரொம்ப அழகா இருக்கிற சுந்தரம் இந்த பகவான் பாதம் பிரதிஷ்டை ஆனதுக்கு அப்புறம் இன்னும் நிறைய சுந்தரமாயி எல்லாரையும் இங்க வந்து தன்னோட பாதத்தை சேவிச்சுட்டு தன்னோட பாதத்தில் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இன்னும் நல்ல சேவைகள் செய்யணும் அப்படின்றது தான் பகவானோட in his own words he says, I am here when all of you can do his seva. That is what the message of the organization, that we all do his seva for our own benefit and for alleviating the needs of the various people. Continuing our small development activities. அதாவது Swami always says, do seva where it is required. Do seva to the people for whom it is required. In the same basis, we are starting a series of skill development centers. திறன் மேம்பாட்டு மையம்னு சொல்லுவோம். We used to call it as தொழிற்பயிற்சி மையங்கள், அது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து திறன் மேம்பாட்டு மையம் நிறைய மாற்றி we have started mini vocational training centers. We are starting today a series of vocational training centers, and in the divine presence of Bhagavan and with the greetings of our managing trustee Sri Sathya Sai Central Trust, I will be inviting the district president and the convener of the respective samiti where the centers are being opened. We are also fortunate in the புண்ணிய தருணத்தில் நிறைய பஜன் மண்டலிகள் திறக்க இருக்கிறோம், நிறைய பால விகாஸ் வகுப்புகள் திறக்க இருக்கிறோம், and not the least, I am very happy to announce 2014 ஆரம்பிக்கப்பட்ட மொபைல் ஹாஸ்பிட்டல் சேவா கடந்த 2 வருடங்களாக நடக்காம இருக்கு. For the last 2 years we have not been doing the mobile hospital seva. On this very holy and auspicious occasion, I am extremely happy to announce that we will be restarting the seva from this Sunday, the 12th of June, with Bhagwan's blessings and his infinite mercy, and with lot of protection and precaution as outlined by Dr. Mohan and our respected doctors Ram Manohar and Dr. Prabhu, and of course Dr. Nagaraju. They have laid down a new set of protocols in the Pudidaha, it's version 2 now, we will call it version 2. Pudidaha, it will be a complete newly protected environment. We are going to do with lot of protocols and protection. So we'll pray to Bhagavan that this new version of our mobile hospital seva continues to benefit all those who have been suffering from whatever diseases. So thank you once again for this patience. Now I'll invite the district presidents to come on stage along with the respected convener and collect the cards from our respected managing trustee sir. Firstly, Skill Development Center Plumbing and Electrical, Sri Sathya Sai Nivas, Perambur, Chennai Metro North. Next, Chennai Metro South, I invite Brother Anand and the Egmore convener and also the Mylapore convener. Thiran Membattu Mayangal Tailoring at Egmore.
and Skill Development Center Computer, Mylapore. Southeast. Brother Ramesh Sharma and Bala Murli. Skill Development Center Computer at Kondangi Village. Guru Prasad. Skill Development Center Computer and Tailoring at Mogapayar Samiti. Chennai West, Venkatesh. Nungambakam, Krishnapuram. Go fast, fast. Now we are starting the Balvikas classes. It was skill development centers. Now Balvikas classes at Chennai Metro West. 3 centers, 1 in Nungambakam and 2 in Krishnapuram Samiti. We invite Brother Raghavendra and his team. It's a long list, so please all of you. Balvikas classes at Tiruvatiyur, Balvikas classes at Villivakam, 2 classes in Sendil Nagar Samiti, 2 classes in Korattur, and 1 class in Red Hills. Minju. Sairam, I'm also happy to announce the upgradation of Minjur Shanmugam. Upgrading Minjur from Bhajan Mandali as a Samiti. Tiruvallur West, Gopal sir. Gopal sir has the distinction of starting 2 new Bhajan Mandalis. Perambur village and Vepambattu. This only shows Bhagwan's love will continue to spread, and that is exactly what Swami wants. He wants us to spread his love across the length and breadth, and that is exactly what we are doing. Thank you, sir. Last but not least, I'll invite our disaster management team brothers. Come. Sir. நம்முடைய disaster management team is recognized as the best not only by our own organization but தமிழ்நாடு அரசாங்கமே இவங்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்து we have been inducted as part of the disaster response guards of the Tamil Nadu government. இது ஒரு தனி ஃபங்க்ஷனா வச்சு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. So we are launching a new uniform and design for them.
Sir, Dr. Nagaraju, Dr. Prabhu, Dr. Ram Manohar Rao. We will be restarting the mobile hospital, so they will just get the greetings from our managing trustee. சைராம் அவரோட பல அலுவல்களுக்கு இடையே நம்முடன் வந்து இந்த விழாவினை சிறப்பித்ததற்கு ஒரு ஸ்பெஷல் applause for our managing trustee for spending எல்லாருக்கும் தெரியும், இப்போ தான் சொன்னோம், அவருடைய ஆஸ் அ மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி அவருடைய அலுவல்கள் நம்ம போய் அவர் ஆஃபீஸில் பார்க்கணுன்னா யூ நோ ஹவு டிஃபிகல்ட் இட் இஸ். அமங்ஸ்ட் இஸ் வேரியஸ் ஒர்க்ஸ், அமங்ஸ்ட் இஸ் வெரி பிஸி ஷெட்யூல், he has taken the time and come here to be part of this momentous Pāda Prathishta. So once again, sir, we thank you very much for taking your time. And also, இன்னைக்கு மட்டும் இல்லாமல் நாளையிலிருந்து அடுத்த 3 நாளுக்கு நிறைய மாவட்டங்களுக்கு அவர் டூர் செய்ய இருக்கிறார். எல்லா இடத்துலையும் இதே போல் சத்யசாய் பஜன் மண்டலி, சத்யசாய் திறன் மேம்பாட்டு மையங்கள் ப்ளஸ் சமிதிஸ், பால்விகாஸ் கிளாஸஸ் எல்லாம் திறக்க இருக்கிறோம். We pray to Bhagwan that he should continue to guide us and inspire us to spread his message of love far and wide, and we keep on getting inspiration from him and blessings from him. Thank you all. Jai Sai Ram. Sir, already with the standing ovation we gave, I think it is very apparent the amount of love and respect we have for you, sir. Now it is our proud privilege to invite you, sir. Now it is occasion for our chief guest to address this August gathering. Now we invite Sri R.J. Ratnakar, sir, Managing Trustee, Sri Sathya Sai Central Trust. Is it okay? Yeah. Is it okay? I offer my most humble and prayerful salutations at the divine lotus feet of our beloved master, Bhagwan Sri Sathya Sai Baba. நான் என்னுடைய மிக பணிவான பிரார்த்தனை மிக்க வணக்கங்களை பகவான் சத்யசாய் பாபாவின் திருவடிகளில் சமர்ப்பிக்கிறேன். Dr. Mohan, fellow trustee on the board of Sri Sathya Sai Central Trust, elders, my very dear brothers and sisters, very loving Sairam to each one of you here. சத்யசாய் மத்திய அறக்கட்டளையின் டாக்டர் மோகன் அவர்களே, டாக்டர் வி மோகன் அவர்களே, மற்றும் பெரியோர்களே, இங்குள்ள சகோதரி சகோதரர்களே, என்னுடைய சாய்ராம் வணக்கங்கள். Coming to Sundaram brings a lot of memories to my heart. சுந்தரத்துக்கு வருவது எனக்கு ஏராளமான நினைவுகளை என் இதயத்தில் கொண்டு வருகிறது. Nearly 41 years back, as a kid, I was brought by Bhagwan
for Sundaram inauguration in 1981. கிட்டத்தட்ட 41 வருடங்களுக்கு முன்னால் ஒரு குழந்தையாக என்னை சுவாமி இங்கே அழைத்து வந்தார். 41 years back, whatever the impression Sundaram has made on my mind, that beautiful Sundaram along with Swami, which I witnessed, even today it vibrates with same divine love and divine vibration, and this Sundaram is really always remained Sundaram, and it will remain Sundaram forever and ever. 41 வருடங்களுக்கு முன்னாலே என்னுடைய மனதிலே இந்த சுந்தரம் எந்த அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியதோ அதே அதிர்வுகளை இன்றைக்கும் இங்கே ஏற்படுத்துகிறது. இது சுந்தரம் என்றால் அழகு, அது அழகுதான், எப்போதும் அது அழகாகவே இருக்கும். Maybe 10-12 years kid could not have imagined something so beautiful that is happening today after almost 4 decades. 40 வருடங்களுக்கு பிறகு இப்படி ஒரு அழகான நிகழ்ச்சி இங்கே நடக்கும் என்பதை ஒரு 12 வருடங்களுக்கு முன்னால் நாம் கற்பனை செய்து பார்த்திருக்க முடியாது. It's not possible for human beings to understand nor fathom the divine plans. மனிதர்களால் தெய்வீக திட்டங்களை புரிந்து கொள்ளவோ ஆழங்காணவோ முடியாது. It is just easy for us to surrender to Him and hold His hand, walk in His path, and He will guide us always. அவருடைய பாதங்களில் சரணடைந்து அவருடைய கைகளை பிடித்துக்கொண்டு அவரோடு நடந்து செல்வதுதான் நமக்கு இயல்வது. Today, Sundaram precincts, we are having a beautiful Swami's Pāda Prathishta. இன்றைக்கு சுந்தரத்தில் மிக அழகான பாதுகை பிரதிஷ்டை ஒன்று நடைபெற்றது. It's one more blessing that Swami is conferring not on Sundaram but the people of Chennai. அது சுந்தரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அல்ல, சென்னையில் இருப்பவர்களுக்கே பகவான் அருளிய வரப்பிரசாதம். Whenever we talk about Swami's lotus feet, we always Bhagavan's lotus feet. நாம் எப்பொழுது பகவானுடைய பாதங்களை பற்றி பேசினாலும் பொற்றாமரை பாதங்கள் என்றுதான் பேசுகிறோம். Because lotus is soft, lotus is beautiful. We always want to remember his feet as beautiful as lotus. தாமரை மலர் மென்மையானது, மிக அழகானது. பகவானின் பாதங்களும் மிக மிக அழகானவை. Once few devotees were sitting with Bhagavan and he was chatting with them. ஒரு நாள் நாங்கள் எல்லாம் பகவானோடு உட்கார்ந்து அவரோடு பேசிக்கொண்டிருந்தோம். Swami asked one devotee, what do you want? சுவாமி பக்தர்களிடம் உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டார். The devotee said, Swami, I want your lotus feet. அந்த பக்தர் சொன்னார், சுவாமி உங்களுடைய தாமரை பாதங்கள் வேண்டும் என்றார். Then Swami looked at him and gave him a very smile and said, why you are asking for lotus feet? Why you are asking for my feet? சுவாமி அவரை பார்த்து ஒரு புன்னகையோடு, ஏன் என்னுடைய பாதங்களை கேட்கிறாய் என்று கேட்டார். Swami, you always want to worship your feet. That's why I am asking for your feet. சுவாமி, நாங்கள் எப்போதும் உங்களுடைய பாதங்களை பூஜிக்கவே விரும்புகிறோம், அதனால் தான் உங்கள் பாதங்களை கேட்கிறோம் என்றார். And Swami said, Bangaru, that is not right desire. சுவாமி கூறினார், பங்காரு, அது சரியான ஆசை அல்ல என்றார். Why do you ask for feet? ஏன் பாதங்களை கேட்கிறாய்? You ask for me. As a whole I will be with you.
என்னையே கேள், நான் முழுவதுமாக உன்னோடு இருக்கிறேன். Why do you want to one feet, somebody asks for hand, somebody asks for leg? Why do you want to divide me into different parts of the body? Ask me as a whole, I will be always with you. ஏன் பாதங்களை கேட்கிறாய்? ஒருவர் கையை கேட்பார், ஒருவர் வேறொரு பாகத்தை கேட்பார். நான் முழுமையாகவே உன்னோடு இருக்கிறேன், என்னையே கேள் எப்போதும் என்றார். So, and he also said, if you keep on asking your feet, I will leave the feet and I will go away. நீ பாதத்தை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தால் நான் பாதத்தை இங்கு விட்டு நான் போய்விடுவேன் என்று சுவாமி கூறினார். If Swami goes away, then what do we do with the feet? சுவாமி போய்விட்டால் பிறகு பாதத்தை வைத்துக்கொண்டு நாம் என்ன செய்வது? But in this country, in this great country, you always worship the elders, worship God, worship all the great sages, saints, everybody. Only there, that's the way we showed our reverence to the people, or the great ones. இந்த மகத்தான நாட்டிலே நாம் எப்போதும் பெரியோர்களை, மகான்களை, கடவுளை, அவர்களுடைய பாதங்களைத்தான் நாம் பூஜித்திருக்கிறோம் நம்முடைய மரியாதையை காண்பிப்பதற்கு. When Rama was sent on exile, Vanavasa, ராமர் வனவாசம் சென்றபோது it was a shock to everybody. அது மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியாக எல்லோருக்கும் இருந்தது. It is very difficult for all the people in Ayodhya to take it. அயோத்தியாவில் இருந்த மக்கள் எல்லோருக்கும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. So when he started going, then Bharata went to Rama and said, we are unable to bear this separation. அவர் கிளம்பிய போது பரதர் அவரிடம் சென்று இந்த பிரிவை எங்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது என்று கூறினார். He went and told him, please come back to Ayodhya. திரும்பி வாருங்கள் அயோத்தியாவுக்கு என்று அவர் ராமரிடம் கூறினார். Rama said, no, it is not possible. This is a word which I have given. I have to obey this. ராமர் கூறினார், இது என் தந்தைக்கு கொடுத்த வாக்கு, அதற்கு நான் கீழ்ப்பட்டாக வேண்டும், நான் திரும்பி வர முடியாது என்று கூறினார். Bharata tried his best. பரதர் தன்னால் இயன்றவரை கூறி பார்த்தார். In fact, Swami says in some place, he even did a hunger strike. சுவாமி கூறுகிறார், பரதர் பட்டினி உபவாசம் கூட இருந்து பார்த்தார் என்று கூறுகிறார், ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக். And Rama admonishes him, you should not do all these things. இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்று அவருக்கு கண்டித்து கூறினார் ராமர். You go back and rule Ayodhya. I will come back after Vanavasa. நீ அயோத்தியாவுக்கு சென்று அதை அரசாண்டு கொண்டிரு, நான் திரும்பி வருகிறேன் வனவாசத்துக்கு பிறகு என்று ராமர் கூறினார். But he was not satisfied. Bharata was not happy. பரதர் அதில் சந்தோஷம் அடையவில்லை. Swami, how can I be a king of Ayodhya when you are yourself here? நீங்கள் இருக்கும் பொழுது நான் எப்படி அயோத்தியாவின் அரசராக இருக்க முடியும் என்று பரதர் கேட்டார். So then they will come for one kind of a agreement, and then he says, I will take your padukas and go and install on the throne of Ayodhya and rule the country. அப்போது அவர்கள் ஒரு உடன்படிக்கைக்கு வந்தனர். என்னவென்றால், நான் உங்கள் பாதுகையை கொண்டு போய் அங்கே சிம்மாசனத்தில் வைத்து நான் அயோத்தியாவை அரசாட்சி செய்கிறேன் என்றார். Till Rama comes back, Bharata takes padukas of Rama and puts on the throne of Ayodhya and performs the duties in Ayodhya. ராமர் திரும்பி வரும் வரை பரதர் அவருடைய பாதுகைகளை வைத்து அயோத்தியாவில் அரசாட்சி செய்து கொண்டிருந்தார். Today we have our beloved Swami's padukas installed in Sundaram. இன்றைக்கு சுவாமியினுடைய பாதுகைகளை இங்கே சுந்தரத்தில் நாம் பிரதிஷ்டை செய்திருக்கிறோம். How Bharata installed padukas of Rama and administered the Rama Rajya, that became, actually that 14 years was only Lord Rama's padukas were ruling the Ayodhya. From today onwards, I think Sai padukas will rule Ram and the Chennai state. எப்படி 14 ஆண்டுகள் ராமருடைய பாதுகைகள் அயோத்தியை ஆண்டு கொண்டிருந்தனோ, ராமராஜ்யம் செய்து கொண்டிருந்தனவோ, அதுபோல இன்றிலிருந்து சென்னையை இங்கே பகவானுடைய பாதுகைகள் ஆட்சி செய்து வரும். Because in our Vijay was saying in the introductory remarks that the 4 gods and gods went to in one place where they saw themselves in in the batches of 4 in thousands and thousands, but in the end there was a Kutti Padam.
விஜய் ஆரம்பத்தில் கூறினார், எப்படி 4 கடவுளர்களும் ஒரு இடத்திற்கு போனது அது போன்ற 4 கடவுளர்கள் 1000 பேர் இருந்தனர், ஆனால் இறுதியில் ஒரு குட்டி பாதம் மட்டுமே இருந்தது என்று கூறினார். But Swami also says adi kutti padame, not only just kutti padam but adi gatti padam also. அது குட்டி பாதம் மட்டுமல்ல கெட்டி பாதம் கூட என்று சுவாமி கூறினார். Because that is the same feet which gave moksha to Bali Chakravarti. பலி சக்கரவர்த்திக்கு மோட்சத்தை கொடுத்த அதே பாதங்கள் தான் அவை. It's the same feet which turned a stone into Ahalya. ஒரு கல்லை அகல்யாக மாற்றிய அதே பாதங்கள் தான் அவை. It's the same feet a goddess Lakshmi very devotedly performs Pāda Puja 24/7. லக்ஷ்மி தேவி 24/7 என்கிற கணக்கிலே பாத பூஜை செய்கின்றவை அதே பாதங்கள் தான். That's why we have a song Brahma Kadigina Padamam. That means Brahma washed the feet. That is the feet which Brahma himself washed it. இந்த பாதங்கள் தான் பிரம்மா நீராட்டினார் கழுவினார் என்று ஒரு பாடல் இருக்கிறது. So that feet, so it is Kutti Padamu but it is very Gatti Padamu. ஆக இது குட்டி பாதமாக இருந்தாலும் அவை கட்டி பாதங்கள். We should hold on to that lotus feet. நாம் அந்த தாமரை பாதங்களை கெட்டியாக பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். And Swami always, it's a most coveted thing for any devotee who goes to Prasanthi Nilayam or whoever visits Swami to have his Pada Namaskaram. சுவாமி பிரசாந்தி நிலையத்துக்கு வருகிற எல்லோருக்கும் பாத நமஸ்காரம் எடுத்துக்கொள் என்றுதான் கூறுவார். How many millions of people got blessed just by touching his feet or when he gave you Pada Namaskar? எத்தனை கோடி பேர் அவருடைய பாத நமஸ்காரம் எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றனர். So once we touch that feet, even a stone could turn itself into a human Alya. Imagine when we touch that great avatar's padam, how much of divine blessings and divine vibrations will come into us. அந்த பாதத்தை தொட்டவுடன் ஒரு கல்லாக இருந்தது கூட அகல்யை என்ற மானுட பெண்ணாக ஆனது போல சுவாமியினுடைய பாதங்களை தொட்டதினால் எவ்வளவு மாற்றத்தை அது நம்மில் கொண்டு வந்திருக்கும் என்று யோசித்து பாருங்கள். It is a great opportunity, great blessing for all of us to be here and witnessing this function. இந்த இடத்தில் இருந்து கொண்டு இந்த விழாவை பார்ப்பது மிகப்பெரிய வாய்ப்பு, மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம். Many times when introductions are happening, if I am told that I have taken time off to come here and in my busy schedule, I get little worried. பலமுறை என்னுடைய மிக பிஸியான வேலையிலிருந்து பணியிலிருந்து இங்கே வந்து வருவதற்கு நேரம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது எனக்கு கொஞ்சம் கவலை ஏற்படும். Really I get worried. நிஜமாகவே எனக்கு கவலை ஏற்படும். What more work I can be part of than to Prathishta of Bhagavan's Padakas? பகவானுடைய பாதங்களை பிரதிஷ்டை செய்வதை விட பெரிய வேலை வேறு எனக்கு எது இருக்க முடியும்? Work is there, work happens every time. வேலை இருக்கிறது, வேலை எப்போதும் தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. I remember I met one gentleman way back, maybe 25 years back from Southeast Asia. தென்கிழக்கு ஆசியாவிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒருவரை நான் சந்தித்தேன். He had a huge corporation and he was a chairman of a very huge corporation because he doesn't like to be told about his background. So I'm just telling you what the incident is about. அவர் தன்னை பற்றி சொல்லிக் கொள்வதை விரும்பவில்லை, ஆனால் அவர் மிகப்பெரிய ஒரு குழுமத்துக்கு கம்பெனிக்கு சேர்மனாக இருந்தார். It's a massive organization and he regularly comes to Puttaparthi. அவர் மிகவும் செயல் வீரராக இருந்தார். ஆர்கனைசேஷனிலும் நிறுவனத்திலும் அடிக்கடி புட்டபர்த்திக்கு வருவார். He comes every 6 months, stayed for 2 weeks and then goes back. 6 மாதத்துக்கு ஒரு முறை புட்டபர்த்திக்கு வந்து 2 வாரங்கள் அங்கே தங்கியிருந்து விட்டு திரும்பி போவார். In those good olden days we had not much internet or phone connectivity. அந்த காலத்தில் இன்டர்நெட் அல்லது தொலைபேசி தொடர்புகள் எல்லாம் இல்லாத காலம். 25-30 years back it was not so well connected and mobiles were not very present everywhere. 25-30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே இப்படி மொபைல் போன்கள் என்றெல்லாம் கிடையாத காலம். So I happened to get introduced to him. நான் அவருக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டேன். So in our conversation
I asked him, sir, do you like to sit in veranda? Because that is the time when everybody is a coveted place. Everybody wants to sit in veranda. சார், நீங்கள் தாழ்வாரத்தில் வராண்டாவில் உட்கார்ந்து கொள்கிறீர்களா என்று கேட்டேன். ஏனென்றால் அப்போது எல்லோருமே அங்கு உட்கார விரும்பிய காலம் அது. Because a lot of recommendation comes to sit because Swami comes on veranda, so everybody wants to sit in veranda. He was sitting in devotees, so I asked him, do you want to sit in veranda? பல பரிந்துரைகள் எல்லாம் வரும். சுவாமி அப்போது வராண்டாவில் வந்து நடந்து தரிசனம் கொடுப்பார். அதனால் அவரோ பக்தர்களோடு சேர்ந்து தான் உட்கார்ந்திருப்பார். நான் அவரை கேட்டேன், நீங்கள் இங்கே உட்கார விரும்புகிறீர்களா என்று. He said, no, Mr. Ratnakar, I don't need to have that privilege now. இல்லை திரு ரத்னாகர் அவர்களே, எனக்கு அந்த வெகுமதி வேண்டுவதில்லை என்று கூறினார். He was staying outside in some hotel. அவர் வெளியே ஏதோ ஒரு ஹோட்டலில் தங்கி இருந்தார். I asked him, do you want a accommodation inside Mandir? நான் உள்ளே மந்திருக்குள்ளே தங்க விரும்புகிறீர்களா பிரசாந்தி நிலையத்தில் என்று கேட்டேன். He said, no, I'm okay, already I've taken room, not required. நான் வெளியே அறை எடுத்திருக்கிறேன், நல்ல வசதியாகத்தான் இருக்கிறது, இங்கே தேவையில்லை என்று கூறினார். I was quite surprised at this answer. Generally people jump at these offers. எனக்கு இது மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஏனென்றால் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு வந்தால் மக்கள் உடனே தாவி பிடித்துக் கொள்வார்கள். Then I asked him, what makes you come here, sir? Every 6 months once you come for 2 weeks. What makes you come? Just I wanted to know, as a young man, I also 25-30 years back, so I wanted to know. 6 மாதத்துக்கு ஒரு முறை 2 வாரம் இங்கே எதற்காக நீங்கள் வருகிறீர்கள்? நான் அப்போது இளைஞனாக இருந்தேன், அதனால் எனக்கும் ஒரு ஆர்வம் இருந்தது அதை அறிந்து கொள்வதில். He said something very touching. அவர் நெஞ்சை தொடும் ஒரு விஷயத்தை கூறினார். He said, I was maybe 9-10 years my parents. நான் 9-10 வயதாக இருக்கும் பொழுது என்னுடைய பெற்றோரை இழந்தேன் என்று அவர் கூறினார். It's just that by luck of God or blessing of God, somebody helped me to study, and so much of blessings I have received, and I have my own company doing so well. அதிர்ஷ்டம் அல்லது பகவானுடைய ஆசீர்வாதத்தாலே யாரோ என்னை படிக்க வைத்தார்கள், நான் நன்றாக வளர்ந்து இன்றைக்கு ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கு சேர்மனாக இருக்கிறேன், நன்றாக இருக்கிறேன் என்று கூறினார். But first time when I came to Puttaparthi, sitting in the crowd, when I saw Bhagavan, whatever that gap that I don't have parents, that got fulfilled. முதல் முறை நான் புட்டபர்த்திக்கு வந்த பொழுது சுவாமியை பார்த்த உடனே என் பெற்றோர் இல்லாத அந்த இடைவெளியை பகவான் என்னுள் நிரப்பிவிட்டார் என்று கூறினார். That feeling that I did not have parents while I was growing, that got vanished as soon as I saw Swami. நான் வளரும் பொழுது பெற்றோர் இல்லையே என்கிற அந்த குறை சுவாமியை பார்த்த உடனே மறைந்து போய்விட்டது. So every 6 months I come to see my father and my mother, and I just see them and go back. 6 மாதத்துக்கு ஒரு முறை இங்கே நான் வந்து என்னுடைய பெற்றோரை தந்தை தாய்களை இங்கே பார்த்துவிட்டு 2 வாரம் இருந்து விட்டு போகிறேன் என்றார். This is a conversation, that's why he told me. Otherwise, how many people are coming to see their father and mother to Puttaparthi? இது ஒரு உரையாடல் நடந்ததனால் அவர் என்னிடம் இந்த விஷயத்தை கூறினார். இல்லை என்றால் எத்தனை பேர் அங்கே தம்முடைய பெற்றோரை பார்ப்பதற்காக வருகிறார் என்று யோசித்து பார்க்கிறேன். Then I again asked him, sir, you have no phones, you have such a huge corporation. 2 weeks you are away. How do you run your company when you are away? நீங்கள் இங்கே 2 வாரம் வந்து விடுகிறீர்கள், இப்பொழுது எந்த தொலைபேசி வசதியும் கிடையாது, ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனி, எப்படி உங்களால் அதை நடத்த முடிகிறது இங்கே இருந்து கொண்டு? He told me, Ratnakar, I will tell you one secret. நான் உங்களுக்கு ஒரு ரகசியம் சொல்கிறேன் என்று என்னிடம் கூறினார். These 2 weeks my company runs very smoothly because I am not there, Swami is looking after it. இந்த 2 வாரங்களும் நான் அங்கு இல்லாத காரணத்தினால் சுவாமி அதை பார்த்துக் கொள்கிறார், கம்பெனி மிகவும் மிருதுவாக ஒழுங்காக நடக்கிறது என்று கூறினார். When I am there I may make mistakes, but now it is no way, it is fool proof. Completely, it is completely guaranteed, and Swami takes care of it. நான் அங்கே இல்லாத பொழுது முழுமையாக சுவாமியை பொறுப்பேற்று நடத்தி விடுகிறார், அது தானே நடந்து கொண்டிருக்கிறது சரியாக என்று கூறினார். Even today, whatever we are doing, we are not doing, it is Bhagavan who is doing everything. இன்றைக்கும் கூட எதெல்லாம் நடக்கிறதோ அதை நாம் செய்யவில்லை, பகவான் நடத்துகிறார். Swami writes in Ramakatha Rasava, a beautiful episode. சுவாமி ராமகதா ரசவாகினியில் ஒரு அழகான சம்பவம் ஒன்றை கூறுகிறார். Because when Mother Sita is being taken by Ravana, she just leaves some sort of jewelry and all that. She drops so that
somebody finds, so Mother Sita has been taken this side. சீதா மாதாவை கவர்ந்து செல்லும் பொழுது அவர் தன்னிடமிருந்த ஆபரணங்களை நகைகளை ஒவ்வொன்றாக போட்டுக்கொண்டே போகிறார். அதை ஒரு அடையாளமாக விட்டு செல்கிறார். She leaves all of them so that if somebody in search of her, they will find and then they'll know that she has been abducted or taken in this direction. நகைகளை எல்லாம் அவர் போட்டுக்கொண்டே போவது எதற்கு என்றால் யாராவது அவற்றை பார்த்தால் இந்த வழியாகத்தான் சீதா மாதாவை கொண்டு போயிருக்கிறார்கள் என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் என்பதற்காக. So all the Vanara Sainya, they find and then bring it to Rama and say they do not know whose jewelry they belong to. வானர் சேனை தேடிக்கொண்டு போகும்பொழுது அந்த நகைகள் எல்லாம் சேகரித்து ராமரிடம் கொண்டு வருகிறார்கள். அவர்களுக்கு அந்த நகைகள் யாருடையவை என்பது தெரியாது. Then Rama says to Lakshmana, can you identify all this? Anything is there which belongs to Sita? இந்த நகைகளை உன்னால் அடையாளம் காண முடியுமா? இது சீதையுடையதுதான் என்பதை உன்னால் சொல்ல முடியுமா என்று ராமர் லக்ஷ்மணரிடம் கேட்கிறார். They show earrings. He says, I do not know. அவர் காதணியை காண்பிக்கிறார். எனக்கு தெரியாது என்கிறார் லக்ஷ்மணர். Lot of necklaces. Lakshmana says, I do not know. அவர் கழுத்து ஹாரத்தை காண்பிக்கிறார். அதுவும் தெரியாது என்கிறார் லக்ஷ்மணர். They show bangles. Lakshmana says, I do not know whether it's Mother Sita's. அவர் கைவளையலை காண்பிக்கிறார். அதுவும் எனக்கு தெரியாது என்கிறார் லக்ஷ்மணர். Finally they show anklets. இறுதியாக காலில் அணியும் சலங்கையை காண்பிக்கிறார். Then Lakshmana says, yes, this belongs to Mother Sita. அப்போது லக்ஷ்மணர் சொல்லுகிறார், இது சீதா மாதாவுடையதுதான் என்று கூறுகிறார். Adaptiya, how did you find out? எப்படி இது மட்டும் தெரிந்தது என்கிறார். He says, I never lifted up my head and saw Mother Sita. நான் ஒருபோதும் தலையை நிமிர்ந்து சீதா மாதாவை பார்த்ததில்லை என்கிறார் லக்ஷ்மணர். Every day whenever I take her namaskar, I only see her feet and then I see these anklets. தினந்தோறும் நான் சீதா மாதாவுக்கு நமஸ்காரம் செய்யும் பொழுது அவருடைய பாதத்தை தொடுகிறேன், பாதத்தை பார்க்கிறேன், அங்கே நான் இந்த பாத அணிகளை இந்த சலங்கை பார்க்கிறேன் என்றார். So whenever I was taking Pāda Namaskar of Mother Sita, then I recognize these anklets. Swami says that is how it should be, always looking at the feet of Lord, but so that you get the protection what Lakshmana got throughout his life. நான் பாத நமஸ்காரம் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது நான் அந்த பாத சலங்கையை பார்க்கிறேன் என்று சொன்னது போல நீங்களும் நமஸ்காரம் செய்யும் பொழுது கடவுளுக்கு அந்த பாதங்களையே பார்க்க வேண்டும். அப்போதுதான் உங்களுக்கும் கடவுளுடைய அந்த பாதுகாப்பு கிடைக்கும் என்று சுவாமி கூறியிருக்கிறார். This is the culture of this country. அதுதான் இந்த நாட்டின் கலாச்சாரம். This is the greatness of this country. அதுதான் இந்த நாட்டின் மகத்துவம். This is what all our rishis, munis have come to tell us. நம்முடைய ரிஷிகளும் முனிவர்களும் நமக்கு கூற வந்தது இதுதான். It is not ordinary padam. இது சாதாரணமான பாதம் அல்ல. Because a lot of us think, we keep coming across a lot of they talk about padams. நாம் பல வகையான பாதங்களை பற்றி கேட்கிறோம். Because you will talk about Guru Padam, then you will talk about Rishi Padam or whatever yogis. But this is the avatar himself, Bhagavan himself is representing, and this is what we have got from Prasanthi Nilayam to Sundaram today. நாம் ரிஷி பாதங்கள், முனி பாதங்கள், குரு பாதங்கள் என்று பலவற்றை கேட்கிறோம். ஆனால் இது சாட்சாத் பகவானின் பாதம். புட்டபர்த்தியிலிருந்து பிரசாந்தி நிலையத்திலிருந்து இதை நாம் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். Because Swami in one of his discourse beautifully says, this is a small story which Swami says about this. ஒரு சமயம் சுவாமி ஒரு சிறிய சின்ன கதை கூறியிருக்கிறார். This was a king and a minister. ஒரு அரசரும் மந்திரியும் இருந்தார்கள். And somebody, a very noble, pious, saintly person, they had arranged a satsang like this. அங்கே ஒரு மிகவும் பக்திமானான ஒருவர் ஒரு சத்சங்கத்தை இது போல ஏற்பாடு செய்திருந்தார். In that he was saying God comes down as avatar and always, we have Dasavataras, 10 avatars we have most of in this our country, and all of them, no other country in the world can have so many yogis, so many munis, so many avatars like India. அப்படி பேசும் பொழுது அவர் கூறினார், கடவுள் அவதாரமாக வருகிறார் என்று சொல்லி இந்த தேசத்தில் 10 அவதாரங்கள் வந்த தசாவதாரம் பற்றி கூறினார். இங்கே முனிவர்கள், ரிஷிகள், மகான்கள் வருவதை பற்றியும் கூறினார். இப்படி வேறெங்கும் வந்தது கிடையாது என்று அவர் கூறினார். So God himself comes and presents himself as avatars. That is what he was saying. அவர் பேசும் பொழுது கடவுளே இங்கே வந்து அவதாரமாக பிறக்கிறார் என்று கூறினார். After the speech was over, then king and minister were talking in the private chambers.
அந்த உரை முடிந்த பிறகு அரசரும் மந்திரியும் தம்முடைய அறையிலே பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். Then king asked minister, somehow I am not convinced that God will come down. அப்போது மந்திரியிடம் அரசர் கூறினார், ஏதோ எனக்கு தெரியவில்லை, கடவுள் பூமிக்கு வருவார் என்று எனக்கு தோன்றவில்லை என்று கூறினார். He may send somebody who is working for him, but why will he himself will come? தன்னிடம் வேலை செய்யும் யாரையாவது வேண்டுமானால் அனுப்பி வைக்கலாம், அவரே ஏன் வர வேண்டும் என்றார். He will have so many people whom he can send Varuna one side, some Agni one time, Vayu one time, like that he can send somebody, but why do he need to come himself? வருணா, அக்னி, வாயு என்று அவரிடம் வேலை செய்பவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள், அவர்களை அனுப்பலாமே, அவரே ஏன் வர வேண்டும் என்று கேட்டார். So minister thought for a while. He said, whatever you are saying is I also don't know the answer, but I will find an answer for you. அப்பொழுது மந்திரி கூறினார், எனக்கும் இதற்கு பதில் தெரியவில்லை, ஆனால் பதிலை நான் தேடி கண்டுபிடிக்கிறேன் என்றார். He knew, minister knew the answer. மந்திரிக்கு பதில் தெரிந்திருந்தது. So that day evening what he did, it seems in that little Antapuram, the palace, there was a well, and this minister put a huge stone into the well. அரசரின் மாளிகையில் அந்தப்புறம் இருந்தது, அங்கே ஒரு கிணறு இருந்தது. இந்த மந்திரி அதில் ஒரு மிகப்பெரிய பாறாங்கல்லை தூக்கி போட்டார் கிணற்றுக்குள். It made big sound there. அது மிகப்பெரிய ஒலியை எழுப்பியது. Then he started shouting, Raja's son is drowning in the well. Raja's son is drowning, fallen into the well. உடனே மந்திரி மிக உரக்க கூவினார், அரசரின் மகன் இதில் முழுகிக் கொண்டிருக்கிறார், கிணற்றுக்குள் முழுகிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று உரக்க சத்தம் போட்டார். King heard this and came running and he jumped into the well. அதை அந்த ஒலியை கேட்ட அரசர் ஓடி வந்து அவரே தடார் என்று அந்த கிணற்றுக்குள் குதித்து விட்டார். Then he searched for his son, but there was nothing. Nobody was there. அங்கே தேடி பார்த்தால் கிணற்றுக்குள்ளே யாரும் இல்லை, மகனும் இல்லை, ஒருவரும் இல்லை. Then he came out of the well. கிணற்றிலிருந்து வெளியே வந்தார். Minister, what happened? I searched all the full, but there is no. Where is my son? He is not to be seen. மந்திரி, கிணறு முழுவதும் தேடி பார்த்து விட்டேன், என்னுடைய மகன் இதில் இல்லை, எங்கே என் மகன்? Then the minister smiled and said, no, king, your son did not fall into the well. I only created all the story. அப்பொழுது மந்திரி கூறினார், உங்களுடைய மகன் இந்த கிணற்றுக்குள் விழவில்லை, நான் தான் இப்படி ஒரு கதையை உருவாக்கினேன், சம்பவத்தை. Very upset. அரசருக்கு மிகவும் கோபம் வந்து விட்டது. Why did you do this? இதை எதற்காக செய்தாய் என்றார். I just wanted to give you an answer for your morning question. நீங்கள் காலையில் கேட்ட கேள்விக்கு ஒரு பதில் கூற வேண்டும் என்று நான் நினைத்தேன். What is that your answer? What is that answer you are trying to tell me? நீ சொல்ல விரும்பும் பதில் என்ன என்று அரசர் கேட்டார். King, you have such a big cabinet. You have so many soldiers, so many generals. When your son is drowning, you did not order them, hey, go and search for him. You yourself came and jumped into the well. அரசரே, உங்களுக்கு பெரிய மந்திரி சபை இருக்கிறது, பரிவாரங்கள் இருக்கிறார்கள், தளபதிகள் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் வந்து காப்பாற்றட்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கவில்லை, ஓடி வந்து நீங்களே உள்ளே குதித்தீர்கள். So you could have told a general, go and get my son. You could have ordered somebody to go and do, but you don't do it. As soon as you heard that your son has fallen, you yourself jumped into the well. நீங்கள் உங்கள் தளபதியிடம் சொல்லியிருக்கலாம், வேறு யாரிடமாவது சொல்லியிருக்கலாம், போய் என்னுடைய மகனை காப்பாற்று என்று. ஆனால் உங்கள் மகன் விழுந்தான் என்று கேட்ட உடனே நீங்களே ஓடி வந்து உள்ளே குதித்தீர்கள். When we children are drowning, God himself jumps into the well. குழந்தைகளாகிய நாம் தண்ணீரில் முழுகும் பொழுது பகவானே கீழே இறங்கி வருகிறார். So this is a real Swami's avatar, and how he has himself explained to the so much painstakingly about the God and the avatarhood. இது சுவாமியே எப்படி கடவுள் அவதாரம் வருகிறது என்பதை பற்றி அவரே விளக்கியது இது. We are very lucky to be part of this beautiful Sai mission. இந்த சாய் திருப்பணியில் நாமும் ஒரு பங்கு வகிப்பது ஒரு மிக அழகான அனுபவம் நமக்கு எல்லோருக்கும். It's a merit earned in many lives. பல ஜென்மங்களில் தேடிய புண்ணியத்தின் விளைவு இது. It's not easy that we get to see God in flesh and blood. ரத்தமும் சதையுமாக கடவுளை பார்க்க காண கிடைப்பது அது ஒன்றும் எளிதான விஷயம் அல்ல. And not only seeing him, but to talk to him, to share our problems with him, to share our joys with him, is something which I don't think any generations have ever seen. The known generations have ever seen something like that. பார்ப்பது மட்டுமல்ல, நம்முடைய சுக துக்கங்களை அவரிடம் சொல்வது,
இது எந்த தலைமுறைக்கெல்லாம் கிடைத்தது என்று சொல்ல முடியாது. அவர்களுக்கெல்லாம் கிடைக்கவில்லை. That is the beauty of Sai, and once he is in our life, life becomes a celebration. அதுதான் சுவாமியின் அழகு. சாய் நம் வாழ்க்கைக்குள் வந்துவிட்டால் வாழ்க்கையே ஒரு கொண்டாட்டமாகி விடுகிறது. It is actually our life becomes Sundaram. நம்முடைய வாழ்க்கையே சுந்தரம் ஆகிவிடுகிறது. Troubles will come. Troubles, as a human beings, we have many ups and downs. மனிதர்கள் என்கிற முறையிலே நமக்கு பல ஏற்றத்தாழ்வுகள் கஷ்டங்கள் வரத்தான் செய்யும். Because Swami says, as long as ocean is there, waves will be there. சமுத்திரம் இருக்கும் வரை அலைகள் இருக்கும் என்று சுவாமி சொல்கிறார். As long as life is there, ups and downs, problems, happiness, sorrow, everything will happen. வாழ்க்கை என்பது இருக்கும் வரை அதில் ஏற்றம் தாழ்வு துக்கங்கள் எல்லாம் இருக்கத்தான் இருக்கும். But with Swami in our lives, we will have strength to face anything in this world. நம்முடைய வாழ்க்கையில் சுவாமி இருக்கும் பொழுது நாம் எதையும் எதிர்கொள்ள தயாராக இருப்போம். அந்த பலம் இருக்கும். How many millions and billions of people don't have hope in this world? எத்தனை கோடி கோடி மனிதர்களுக்கு வாழ்க்கையில் நம்பிக்கையே இல்லாமல் இருக்கிறது. There is no hope. Absolutely, there is no hope, no anchoring for them. அவர்களுக்கு எந்த விதமான எதிர்காலத்தை பற்றிய நம்பிக்கையோ ஒரு பிடிப்போ இல்லாமல் இருக்கிறது. As soon as we have smallest thing, we will go to the altar and say, Swami, this is our problem. Immediately, heart becomes light and our mind becomes free. நமக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்த உடனே ஓடி போய் சுவாமியிடம் இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது என்று கூறுவோம். உடனே நம்முடைய மனமும் இதயமும் எல்லாம் எளிதாக கனமில்லாமல் லகுவாகி விடுகின்றன. What a beautiful, comforting feeling it is. எப்படிப்பட்ட அழகான ஆறுதல் தரும் அனுபவம் அது. We have already told Swami, so we are little more relaxed now that we have given it to him, we have conveyed to him, we have told him. நாம் சுவாமியிடம் சொல்லியாயிற்று, பிரச்சனையை கொடுத்தாயிற்று என்று சொல்லி நாம் உடனேயே ஆறுதல் அடைந்து விடுகிறோம். Yes, the moment we tell him, the strength, the divine strength flows from him. அவரிடம் சொன்ன உடனேயே அந்த தெய்வீக பலம் நமக்குள்ளே வந்து பாய்கிறது. Because problem becomes lighter. The problem may not go away, but the way we look at it, the problem will become different. பிரச்சனை ஓடி போய் விடுவதில்லை, ஆனால் அது வலுவிழந்து விடுகிறது. நம்மால் அதை சமாளிக்க முடிகிறது. That's why Swami says, don't come to me, tell that there is a big problem for me. Go to the problem and tell I have a big God, it will run away from you. எனவே சுவாமி சொல்கிறார், நீ என்னிடம் வந்து பெரிய பிரச்சனை இருக்கிறது என்று சொல்லாதே, பிரச்சனையிடம் போய் சொல், என்னிடம் ஒரு பெரிய கடவுள் இருக்கிறார் என்று சொல் என்கிறார். அந்த பிரச்சனை ஓடி போகும். அந்த பிரச்சனை ஓடி போய்விடும். That's what it is. So we are very lucky. We are having this beautiful part of beautiful Sai mission. Today I feel especially blessed to be ushered in by Bhagavan to be in this beautiful Sundaram, to participate in this lovely function of Pāda Prathishta. இந்த சாய் திருப்பணியில் பங்கேற்பதற்கு மிக அழகான வாய்ப்பு நமக்கு எல்லோருக்கும் கிடைத்தது. நான் மிகச் சிறப்பாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதாக இந்த விழாவில் பங்கேற்றுக் கொள்வதனால் மிகவும் அழகாக உணர்கிறேன். Chandrasekhar was saying, welcome to Chennai. You can enjoy a little bit of heat and but you all should know Puttaparthi is no less. மாநில தலைவர் கூறினார், சென்னைக்கு வருக என்று வரவேற்றார். இங்கே இருக்கின்ற வெம்மையை நீங்கள் அனுபவியுங்கள் என்று சொன்னார். ஆனால் புட்டபர்த்தி இதற்கு எந்த விதத்திலும் குறைந்ததல்ல. Puttaparthi is outside very hot, but inside it is very cool. புட்டபர்த்தியில் வெளியே மிகவும் வெப்பமாக இருக்கும், ஆனால் உள்ளே மிக குளிர்ச்சியாக இருக்கும். That's why people from all over the world, even today, after 11 years of Baba's Mahasamadhi, yesterday I was just happened to meet few people from New Zealand and Fiji. They are coming and I asked them, how come you are here? He said, sir, we were waiting for 3 years. We could not wait any longer. The moment Prasanthi Nilayam opened, we have come here to just be in here. And each one of them saying, they will be, one is saying 6 weeks I will stay here, because he wants to make up for all 3 years, it seems.
நியூசிலாந்து மற்றும் ஃபிஜியிலிருந்து சிலர் வந்திருந்தார்கள். அவர்களை கேட்டேன், எப்படி இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள் என்று. 3 வருடங்கள் பிரசாந்தி நிலையத்திற்கு வரவே முடியவில்லை, நாங்கள் காத்து கொண்டிருந்தோம் எப்பொழுது திறப்பீர்கள் என்று. பிரசாந்தி நிலையம் திறந்த உடனே நாங்கள் ஓடி வந்து விட்டோம் என்று கூறினார்கள். By flight it takes 16-20 hours. விமானத்தில் வருவதற்கு 16 முதல் 20 மணி நேரம் ஆகிறது. Imagine they are just waiting to come here. கற்பனை செய்து பாருங்கள், அவர்கள் அப்படியே காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். That is the pull of the supreme soul. அதுதான் பரமாத்மனின் ஈர்ப்பு. That is only a Lord can pull anybody from any part of the world, any part of the universe. கடவுள் மட்டுமே, மகாபிரபுவினால் மட்டுமே உலகின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எங்கிருந்தும் இங்கே இழுத்து வர முடியும். That's why in Sai mission, Sai organization, sun never sets. அதனால்தான் சாய் திருப்பணியில், சாய் நிறுவனங்களில் சூரியன் ஒருபோதும் மறைவதில்லை. We were learning in the social studies in the schools that sun never sets in British Empire. நாம் சோஷியல் ஸ்டடீஸ் பாடத்தில் பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்தில் சூரியன் மறைவதில்லை என்று படித்திருக்கிறோம். That is not any longer holds fact. அது இப்போது உண்மை அல்ல. But in a Sathya Sai mission, sun never sets. ஆனால் சத்யசாய் நிறுவனத்தில் சூரியன் மறைவதே கிடையாது. Every continent, any place you can go, you have a brother or a sister to wish you Sai Ram. எந்த கண்டத்திற்கு நீங்கள் போனாலும் அங்கே உங்களை வரவேற்க ஒரு சகோதரரோ சகோதரியோ காத்திருக்கிறார். This feeling of brotherhood, this feeling of selfless love, selfless service cannot be found anywhere except under Bhagavan's lotus feet, under Bhagavan's benign umbrella. இந்த சகோதரத்துவத்தை, இந்த தன்னலமற்ற அன்பை, இந்த தன்னலமற்ற சேவையை வேறு எங்குமே பார்க்க முடியாது. பகவானுடைய குடைக்கு கீழே நடக்கும் நிறுவனத்தில் மட்டுமே காண முடியும். Before I close, I just want to tell what Bhagavan expected of us. நான் நிறைவு செய்வதற்கு முன்னர் பகவான் நம்மிடம் என்ன எதிர்பார்த்தார் என்பதை சொல்ல விரும்புகிறேன். Swami, in one of his discourses, he says, Manikavachigar there was a torrential rain. He was lying on a veranda. சுவாமி மாணிக்கவாசகரை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார். அது மிக பலமான மழை பெய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் தாழ்வாரத்தில் படுத்து கொண்டிருந்தாராம். It's exactly one person can sleep. That is the size of the veranda. அந்த தாழ்வாரத்தில் ஒரே ஒரு நபர் படுத்துக் கொள்வதற்கு மட்டுமே இடம் இருந்தது. It was torrential rain. It was a heavy rain. அது மிக கடுமையான மழை. Somebody came on that way in that rain. அந்த மழையிலே இன்னொருவர் வந்தார். அங்கே he came near to that place and he saw Manikavachigar sleeping. அங்கே மாணிக்கவாசகர் படுத்து கொண்டிருந்த இடத்திற்கு வந்து அதை பார்த்தார். He started moving because there is no place. வேற இடம் இல்லாத காரணத்தினால் அவரும் உள்ளே நுழைந்தார். Manikavachigar called him. மாணிக்கவாசகர் அவரை அழைத்தார். To sleep only one person, it has a space here. படுத்துக் கொள்வதாக இருந்தால் ஒருவருக்குத்தான் இங்கே இடம் இருக்கிறது. But to sit down, it has a 2 persons place. Let us sit here. உட்காருவதென்றால் 2 பேர் உட்கார முடியும், நீங்கள் இங்கே உட்காரலாம் என்றார். Only for sleeping is a problem because 2 people cannot sleep. But for sitting, 2 people can sit. You don't go away. Please come and sit here. That is what he said. தூங்குவது படுத்துக் கொள்வதாக இருந்தால்தான் ஒருவர் முடியும், ஆனால் உட்காருவது அப்படி அல்ல, நீங்களும் உட்காரலாம், வாருங்கள் என்று அழைத்தார். Third person came, one more person came in that rain. அப்பொழுது மூன்றாவதாக ஒரு நபர் அங்கே வந்தார் மழையில். He came close to the place and saw 2 of them are jam packed and he started moving. அந்த சின்ன இடத்தில் 2 பேர் நெருக்கி உட்கார்ந்திருப்பதை அவர் பார்த்துவிட்டு நகர்ந்து போகத் தொடங்கினார். Then Manikavachigar called him and said, there is a place for 2 people to sit, but there are a place for 3 people to stand. Let us stand and stay here. உடனே மாணிக்கவாசகர் அவரை அழைத்தார். இங்கே உட்காருவதென்றால் 2 பேர் தான் முடியும், ஆனால் இங்கே 3 பேர் நிற்க முடியும் என்று சொல்லி அவரை அழைத்தார். And the place is not what physical place. Here if you have place, the place for everything is available. அந்த இடம் என்பது அந்த பௌதிகமான இடம் அல்ல, உங்கள் மனதில் இடம் இருந்தால் அங்கே இடம் இருக்கிறது. You should have place in your heart, you should have place in your mind. Then everything is possible. That is what Bhagavan expects all of us. உங்களுடைய இதயத்தில், உங்களுடைய சிந்தனையில் இடம் இருந்தால் எல்லாமே சாத்தியம்தான். அதைத்தான் சுவாமி சுட்டிக்காட்டினார். Sharing is caring. பகிர்ந்து கொள்வதே கவனித்துக் கொள்வது. Caring is loving. கவனித்துக் கொள்வதே அக்கறை காட்டுவதே அன்பு காட்டுவது. Loving is living. அன்பு காட்டுவதே வாழ்க்கை. That is what Swami said. All of you should always follow that principle, that you can always,
Never say, even 10 people can sleep, we will say, no, 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 there is no place. அதைத்தான் சுவாமி கூறினார். நாம் எப்பொழுதும் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், ஈவன் 10 பேர் இருந்தார் கூட இடமில்லை என்று சொல்லக்கூடாது. We should always make place. There is always, God has created this entire vast universe for us. இந்த மிக பெரிய பிரபஞ்சத்தை பகவான் நமக்காக படைத்திருக்கிறார். நாம் இடத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். There is no shortage of anything in this world. இந்த உலகத்தில் எதற்கும் குறைவு கிடையாது. 300 million people go in this country without a square meal every day. இந்த நாட்டிலே ஒருவேளை சாப்பாடு இல்லாமல் 300 கோடி பேர் இங்கே வாழ்கிறார்கள். 30 கோடி sir, 30 crores. 30 கோடி பேர் இந்த நாட்டில் இருக்கிறார்கள். That is the data by central government. இதுதான் மத்திய அரசு சொல்லும் புள்ளி விவரம். They can barely make 1 square meal a day. அவர்களால் ஒருவேளை உணவு கூட உண்ண முடியவில்லை. Let us follow, as Bhagavan said, Manik Vachikar, we have little space. If you are sleeping, at least we can sit so that one more person can accommodate. If there is one more person needs that kind of support, let us get up and give little more. That is where Bhagavan will be happy and we will have enormous blessings of God. மாணிக்க வாசகர் செய்தது போல நாம் இடம் ஏற்படுத்துவோம். மற்றவர்களுக்கென்று நாம் ஒதுங்கி இன்னும் கொஞ்சம் வசதிகளை உண்டாக்குவோம். அதுதான் பகவானை சந்தோஷப்படுத்தும். Expansion is my life is what Swami said. விரிவாக்கமே எனது வாழ்க்கை என்று சுவாமி கூறினார். Let us follow that beautiful path, the divine path of Bhagavan, and make our lives a beautiful saga of love. அந்த சுவாமியினுடைய அழகான வாழ்க்கையை பின்பற்றி அந்த அழகான ஒரு சகாப்தத்தை நாம் ஏற்படுத்துவோம். May Swami bless everyone, each and every family, your family members, everybody at home. May Swami bless you with a lot of happiness, peace, prosperity, joy, and more service of God. சுவாமி எல்லோரையும் ஆசீர்வதிக்கட்டும். உங்களுடைய குடும்பத்தினரே, குடும்பத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரையும் அவர்களுக்கு ஆனந்தம், அமைதி, வளம் எல்லாவற்றையும் தந்து ஆசீர்வதிக்கட்டும். Thank you very much. Jai Sai Ram. நன்றி. ஜெய் சாய்ராம். Thank you, sir, for that wonderful speech. It was sprinkled with a lot of anecdotes of Bhagwan and also messages of Bhagwan. It was really heartwarming hearing all those reminiscences. We could feel the warmth of Bhagwan's love in our heart. Thanks for the wonderful speech, sir. I invite our trust convener, Sri B. Rameshar, to make an announcement. Just to make a quick announcement, Mr. M.R. Chandran has been the custodian in Sundaram for many years, and he was a state service coordinator. Slightly indisposed, he could not come, otherwise he would have been here. You know, we all know him, you know, he's not been well. And the kind of work which he did for so many years, it's amazing. So we just want to place on record our appreciation and gratitude to Mr. Chandran. I would also like to say that for the last 2 years, he's not been able to come because of COVID, and then we've got a youngster in Mr. Sai Kumar, who is doing an extremely good job. If you see, one thing I would like about him is he tells me the problem, he tells the solutions, and implements the solutions. These are the people we need in the organization, and he so well connected to the Mailas coordinator, the Gens coordinator, and you know, it's managing Sundaram is not a joke, a huge place. Although I do back him fully, there's no doubt about that. Very disciplined, even if somebody needs vibhuti, somebody has to, on the way, sir, I'll go and give. You see that he is working in VSNL, gave voluntary retirement, very young age. I really appreciate him. I guarantee that he doesn't expect me to speak about him. He doesn't need my acknowledgement, but it's just out of appreciation, and we need such people for the organization to grow. Thank you so much. Thanks, Sai Kumar. Now,
it is time to thank one and all. We thank our revered chief guest, Sri R.J. Ratnakar sir, Managing Trustee, Sri Sathya Sai sir. We also thank Dr. V. Mohan, Trustee, Sri Sathya Sai Central Trust. We thank Professor E. Mukundan sir, the South Zone President, Sri Sathya Sai Seva Organizations. We thank our own trust convener, Sri Sathya Sai Central Tamil Nadu, and all the office bearers of the organizations, all the trustees assembled here, all the elders, all the well-wishers, all the devotees of Bhagwan. Thanks one and all. We also thank from our bottom of our hearts for Bhagwan, for making this occasion, for allowing us this evening an occasion for us to remember him and also think about him. It is his blessing that it is possible. We thank Bhagwan. Now we will have our Mangala Harati of Bhagwan, and we request our Chief Guest Ratnakar sir to do the Mangala Harati. ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपद बांधवा ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदैवमु मरियंतयु नीवे स्वामी मरियंतयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेंद्र शयना ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी वो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल हारति अंतुको मंगल हारति अंतुको मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति शांति
जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। Tomorrow morning around 8:30 we have the Pāda Prathishta function, and after that we have the Kumbhavishekam for the Prathishta Mandap. So tomorrow we request everyone to make yourself available for that function and get Swami's blessings. Today after this function there is prasadam available for everybody. எல்லாருக்கும் சுவாமியோடைய பிரசாதம் இந்த நம்ம சுந்தரத்துக்கு பின்னாடியில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ எல்லாரும் சுவாமியோட பிரசாதத்தை அறிந்துவிட்டு செல்லுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஜெய் சாய்ராம்.